क्या था वो? Absolute shit show. Whatever that was by Chelsea. You can say that, but a lot more. Yes, I know it is not a planned stream, लेकिन I had to come on. Or the reason being that yes, it is half time in another game. तो हो सकता है there might not be many people right now. They are busy watching that match. लेकिन again, for me, it was important to come out and just share with you all by what I feel about this. And this, I don't feel good at all. There's a lot going on in my mind और हम आएंगे one by one. The reason again मैं आ रहा हूँ live and not just video जो मैं करने वाला था बाद में, because I thought it's important to get the natural reaction, plus the fact that भाई मेरा अभी वो मूड नहीं है कि यार मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करूँ और एडिट करूँ, सब अभी यार सच में नहीं है. Absolutely मैं आ रहा हूँ वही something like I really wanted to share with you all, and of course thanks for coming on. जो भी आ रहा है भाई, really thanks. Yes, you might want to wait for a rant, or there are a lot of reasons उसके लिए, लेकिन अभी जो चल रहा है हाफ टाइम में इन द अदर मैच न्यूकासल मैन सिटी, उसको देख के should I rant? Because that is the Premier League. Premier League is absolutely crazy, and that is why we love the Premier League. Absolutely, यार, no two ways about it. Yes, I love football, all kinds of football भाई, लेकिन Premier League में जो results आते हैं, all of a sudden something boom that really happens in Premier League. लेकिन a lot to talk, और हम ब्रेक डाउन करेंगे हर एक रीजन का. और यस, 3 पॉइंट रिव्यू मैं यूजुअली कर रहा हूँ आजकल, राइट? 3 पॉइंट रिव्यू क्या है भाई? आप देख रहे हो थंबनेल में क्लियरली. पहले पैनिक जो किया भाई मेंडी भाई साहब ने, फिर उससे हुआ पेन जो मिला हमको सेकंड गोल से, और फिर हमने पॉटी कर दिया. वही किया है भाई, वही किया है चेल्सी ने. और बात करनी पड़ेगी, काफी सारे पॉइंट्स है. दैट इज जस्ट अ समरी, लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक लिटरली ऑफ एवरीथिंग. इसलिए यार इट वुडंट बी फेयर फॉर मी टू जस्ट डू अ शॉर्ट वीडियो एंड कम. लेकिन हाँ बेगा भाई, तुम मुझे यस बिल्कुल यार, क्या हो गया भाई? आशीष, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन. And yes, not a good day at all for us. Lekin again, thanks for joining. Do like, share, and subscribe. Chad United fan saying United Chelsea bye. आज के लिए absolutely. Ankit bhaiya, tell me one thing. When Mendy knows that he's dog shit at ball playing, why would you do something like that? Pressing again, would you blame Mendy or would you blame Thomas Tuchel and his team? No, that is a question mark, right, Darren? आप बोलिए. But the fact that we didn't create enough chances, barely some shots on target. Fair enough, Rocky. भाई Rocky, काफी दिन हो गए भाई. I know आप, nice to see you as always. Ankit bhai, there's a reality check. Chelsea can't rely on Sterling to get the goals. They need a proper center forward. लेकिन is it just that? I'm telling you, like, it's really a combination. Divyanshu, I understand, I agree as well. ये क्या हो गया भाई? बिल्कुल, we'll break it down slowly and steadily. Even if we sign Ronaldo, Oba, they would make no effect if we play like today. That is the point जो Rocky बोल रहे थे दिव्यांशु. वही मैं भी agree करता हूँ. Mendy needs to be benched. बहुत हो गया इसका, नॉट ओवर रिएक्टिंग. और वही है, गोलकीपर इज जज्ड, yes of course, on the brilliant saves that they make, on penalties, shootouts as such आप करते हो, लेकिन at the same time you are probably judged on your mistakes. और वही हुआ था केपा का 2 साल पहले, सबको याद है. लैम्पार्ड, व्हाट अ फिनिश बाय विल्सन, टॉप नॉच. वाओ, बिल्कुल यार, ये गेम भी बढ़िया चल रहा है. बाय द वे, ये भी साथ साथ में वॉच अलोंग कर लेंगे बिल्कुल. हेलो अंकित भाई फ्रॉम नेपाल. यमराज, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. एंड अगेन यार, आप लोग साथ में हो भाई, थोड़ा सा ये मिल रहा है भाई, एटलीस्ट इतना बुरा परफॉर्मेंस के बाद, रियली गुड टू एक्चुअली सी ऑल. बिल्कुल, द यूनाइटेड रोड इन द हाउस, ऑफ कोर्स पीपल टू चेक हिम आउट एज वेल. अंशुमन इन द हाउस. और यस अंशुमन भाई, मैन यूनाइटेड और चेल्सी आज के लिए भाई मुझे मारो भाई, मैं क्या बोलूं यार, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई नो दैट इट्स फनी, लेकिन यार आई वाज लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? what was happening really, what was happening really. और मैं दिखाने वाला हूं भाई, काफी चीज हम बात किए थे. we build up to the game so much. remember we did a proper preview for the entire weekend, then हमने किया था एक प्री शो, और सब में मैंने एक चीज हाईलाइट किया था. मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. यहाँ पे एक प्रेडिक्टेड 11 में डाला था चेल्सी का, और स्टार्टिंग 11 से ही शुरू करेंगे ऑब्वियसली, राइट? विल कम गोल बाय गोल, मोमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्युटली. लेकिन shouldn't we actually see this? आप देखिए भाई, मैं, someone who is nowhere near Thomas Tuchel, or even people like you also agreed, everyone यहाँ पर knows that when Jorginho is in midfield, what do you require? He requires protection. N'Golo Kante is, भाई वो एलियन है, वो अलग ही लेवल है. इन इज लेवल व्हेन ही प्रोटेक्ट्स, फेयर इनफ. कोवाचिच भी काफी अंडररेटेड है. ही इज आल्सो दैट लेवल इन माय ओपिनियन. व्हेन दे आर नॉट देयर, वी नीड डबल प्रोटेक्शन. और उसको चाहिए था भाई सम फिजिकल एलिमेंट अराउंड हिम. यार Jorginho not only was beaten by pace,
he was also not even in the game a lot of times. हाँ, having said that, जितना था Jorginho did better than other players, उतना भी बोलूंगा मैं. Definitely for people out there, by chance आपको पता नहीं है अभी तक, that yes, we had two injuries. Yes, we started the game well. I would say that we started the game decently. पहले 5 मिनट में अच्छा कर रहे थे, लेकिन इट वाज मोर लाइक 50-50 यार. प्रॉपर एंड टू एंड गेम हो रहा था, प्रॉपर लीड्स और चेल्सी का राइवलरी दिख रहा था. काफी सारे टैकल्स वर फ्लोइंग, काउंटर अटैक ऑफ लीड्स, प्रेसिंग ऑफ चेल्सी, दोनों ही चीज चल रही थी, काफी चीज चल रही थी. और वहीं पर जॉर्जिनियो रिक्वायर्ड, बिकॉज दैट प्रेसिंग फ्रॉम लीड्स एज वेल, डबल प्रोटेक्शन, और वहां पर नहीं मिला. व्हाई डिड टुकल स्टार्ट विद द सिस्टम दैट ही स्टार्टेड? अगेन वी कैन पुट द ब्लेम ऑन हिम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज अ कोच, राइट? लेकिन आप देखिए द स्टार्ट जो मिला था ना, this was a start, and yes, I'll come to the comments as well. लेकिन this was what actually started. ठीक है, this was a starting 11, same 11 है, लेकिन you're playing in a different way. यहाँ पर simple as that, as much as आप रीस जेम्स में कॉन्फिडेंस रखते हो in terms of playing that right center back, and maybe against Leeds का counter attack you want to protect that, but don't you think so? Really, don't you think so that Kukurea does not offer as much in attack than a Ben Chilwell? Yes, मैं थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड में बोल रहा हूँ यहाँ पे. In this formation, I don't think Kukurea gives more to the team compared to basically a left back, or maybe Loftus-Cheek as well. Yes, he did brilliantly against Spurs. You have to give them मतलब बहुत सारा plaudits against Spurs. लेकिन you're playing against Leeds, a pressing Leeds, a high pressing Leeds, a pacey Leeds जहाँ पर Harrison था, जहाँ पे Aronson था. The moment you're seeing that, आपको change करना चाहिए था. You had to go for the back four, not after 50 minutes. That is what I would say. But anyway, let me see. It was crazy. Like only attacking person I think was Reece James to the wing back. बिल्कुल. That is the thing, Rahul. Our only outlet आज के दिन में, our only outlet are our full backs or wing backs. That is the problem. रीस जेम्स और लॉफ्टस चीक, और वहां पर भी लॉफ्टस चीक हग रहा था. आज क्यों हग रहा था? बिकॉज वो दोनों इतने सारे बार खेले नहीं साथ साथ में, तो ही वाज, जब पास कर रहा था रीस जेम्स वाज ऑफ साइड, लेकिन रीस जेम्स वाज ओनली आउटलेट. और क्यों? क्योंकि टीम को इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है लेफ्ट साइड में. सिंपल एज दैट. लेफ्ट साइड में क्यों इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है? कुकुरेया इज ऑसम, लेकिन भाई एज एन अटैकर आई डोंट थिंक ही प्रोवाइड्स मच. मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये. He is not someone जो चेल्सी के लिए गोल स्कोर करेगा इतना compared to maybe a Ben Chilwell. Yes, Ben Chilwell is coming after long term injury, लेकिन मैंने काफी बोला था भाई, if you are playing wing back system, Ben Chilwell is better than a Kukurea. That is what is a fact. आप you have to agree that, because we use our wing backs like our goal scorers. Remember भाई, Alonso Pablo Escobar, why was he crucial at times in cup matches, in these big matches? और चलो फॉर्मेशन तो बात करते ही नहीं यार. भाई देखिए, अगर ये सेम मिस्टेक केपा करता तो पूरा फैन बेस इंक्लूड पंडित वुड हैव क्रूसिफाइड हिम. बिल्कुल बिल्कुल 100%. लेकिन मैं यहां पर मैं बोलूंगा, चलो टूकल का फॉर्मेशन नहीं, मेंडी का नहीं, मेन प्रॉब्लम इज मेंटालिटी. मेंटालिटी भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी क्यों भाई भाई आज क्यों? क्योंकि मेंटालिटी इज एन इश्यू इन बोथ द प्लेयर्स, बोथ द स्क्वाड्स में मेंटालिटी इज एन इश्यू. और मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो पहला गेम था अगेंस्ट ब्राइटन, सबको याद है क्या हुआ था? द मोमेंट ब्राइटन प्रॉपर पेल रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड केम ऑन द बैक फुट और इतना नेगेटिव चल गए, दे वेंट ऑन द शेल, और पता नहीं दे कंसीडर्ड गोल्स, और हाफ टाइम के बाद में दे चेंज. रिमेंबर दैट फर्स्ट गेम. यहां पर क्या हुआ? मैं बोल रहा हूं वापस, फर्स्ट 5 to 7 minutes वी वर एक्चुअली गुड. फर्स्ट इनफैक्ट क्लोज टू 10 to 15 minutes also I would say we were actually decent. हाँ, फर्स्ट 5 minutes में अगेन बैक टू स्क्वायर वन. वही आई थिंक पहला चांस हुआ था स्टर्लिंग का, और मैंने स्टर्लिंग की बहुत बड़ाई कर ली, उस पर आएंगे डेफिनेटली, लेकिन स्टर्लिंग मिस दैट फर्स्ट चांस. एक और चांस लॉफ्टस-चीक को एक फर्स्ट टाइम शॉट लेना था, लेकिन इज ही और गोल स्कोरर फ्रॉम राइट विंग बैक? नो, ही इज नॉट अ गोल स्कोरर. वी नीड गोल स्कोरर एज राइट विंग बैक अगर हम खेलते वो पोजीशन. ठीक है, तो उसने नहीं लिया फर्स्ट शॉट, और वहां पर ऑलरेडी ही वाज वेटिंग फॉर क्रिसमस एंड लीड्स क्लियर्ड इट. फर्स्ट 5 minutes में टू प्रॉपर चांसेस वी हैड. देन व्हाट हैपेंड? मेंडी का हुआ ऑब्वियसली ओवर प्लेइंग विद द बॉल फॉर व्हाट एवर रीजन, आई डोंट अग्री, लेकिन आई बिलीव इट मे बी टूकल एंड द एंटायर कोचिंग स्टाफ बोल रहे होंगे उनको. द मोमेंट वो हुआ उसके बाद जो 50-50 मैच था, क्लियरली इट बिकेम 80-20. टोटली इट वेंट ऑन लीड्स एंड, क्योंकि भाई हम गए अपने शेल में, हम गए डर, और हुआ क्लियरली कि यार एक जो हमारा अटैक था, काउंटर अटैक किया लीड्स ने, और वहां पर स्टर्लिंग पैनिक होके कर दिए, फ्री किक दे दिया. ठीक है, और दो पॉइंट्स में बोलूंगा यहां पर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस. कुलिबाली
6th मिनट में येलो कार्ड भाई. इट वाज क्वाइट एविडेंट, वो उसका ईगो मन में चले गया था. यस, कुलीबाली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस लास्ट वीक, लेकिन द रियलिटी इज इन यूरोप लास्ट 5 सीजंस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैज गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेड कार्ड्स एज अ डिफेंडर इन द टॉप 5 लीग्स. तो ही हैज समथिंग. तो हिज ईगो गॉट द बेटर ऑफ हिम द मोमेंट दैट, भाई इफ आई एम नॉट रॉन्ग एरिसन था क्या, एरिसन बीट हिम, और उसको लगा भाई ये मुझसे मेरे को कैसे बीट कर सकता है, भाई उसको पकड़ो. पकड़ो, 2 बार अटेम्प्ट किया भाई, फिर येलो कार्ड लिया. दैट वाज अ मिस्टेक वेरी अर्ली ऑन 6th मिनट. उससे डिफेंस थोड़ा शैम्बल्स में हो गया था. सेकेंडली, ऑब्वियसली आई हैव टू गिव लीड्स क्रेडिट फॉर दैट प्रेस, ठीक है. सेकेंडली, जो स्टर्लिंग ने किया वो भी मेरे ख्याल से अननेसेसरी था. यू हैव टू ट्रस्ट योर फेलो डिफेंडर्स, दे वर देयर. ऐसा नहीं था ही वाज द लास्ट मैन इन बोथ द केसेस. और हम फ्री किक्स कैसे डिफेंड करते, हम हकते हैं, प्रॉपर हकते हैं फ्री किक्स में. फ्री किक्स में क्या करते हैं याद है सब लोग, स्पर्स, यस, Anthony Taylor was at fault. No two ways about it. Yes, मैं comments लेने वाला हूँ. Just give me a minute. But Anthony Taylor was at fault 100%. लेकिन in that all मतलब लोग भूल गए कि पहला जो कॉर्नर था वहां पे भी ना स्पर्स के साथ मेंडी ने सेव किया था, जो गोल होने वाला था. पेरिसिच का बहुत ही अच्छा कॉर्नर लिया था, ठीक है, वो भी गोल होने वाला था. फिर वी डिडंट लर्न विद दैट, वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द हेयर पुल, और सेकंड में गोल हो गया. आज वापस से फ्री किया गया, गोल, बस. मतलब लास्ट टाइम कब हुआ था व्हेन वी डिफेंडेड लाइक 3 कंटिन्यूअस फ्री किक्स और कॉर्नर्स प्रॉपर्ली यार. मतलब व्हेन यू नो दैट इज अ प्रॉब्लम, प्रीटी श्योर कोचिंग स्टाफ बोला है भाई स्टर्लिंग इज द न्यू प्लेयर, आई अंडरस्टैंड, इवन कोलीबाली, लेकिन दोनों को अननेसेसरी फॉल्स क्यों देना यार, क्यों लेना है येलो कार्ड अर्ली ऑन. बट एनीवे, भैया वी वर नॉट एबल टू बीट लीड्स प्रेस, व्हाट वर वी डूइंग, या, और ये कोई सरप्राइज नहीं था. मतलब अगर आपके वो सरप्राइज है कि लीड्स प्रेस करेगी भाई, तो आप फुटबॉल खेलने के लायक नहीं हो. लीड्स इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेस यार, मतलब सिंपल एज दैट. Kante absence of Mendy, great performance. Oh my God, I know. After Mendy ने का मिस्टेक, लीड्स ने मोमेंटम गेन, बिल्कुल उसके बाद ही, क्योंकि मेंटालिटी चली गई थी चेल्सी की. उसके बाद पता नहीं क्या ही हो गया कि यार हम लोग, मतलब वी काइंड ऑफ गिव अप. और देयर वर टाइम्स यार एज अ चेल्सी फैन, मतलब आई वॉच चेल्सी फॉर 22 years नॉन स्टॉप, आई एम टेलिंग. और मुझे पता है दैट इन द पास्ट whenever we were even at times 2-0 down, भाई we used to fight till the nth moment. मुझे याद है एक मैच था स्टोक सिटी के साथ. यस, स्टोक सिटी ऑफ दैट टाइम, रोरी डेलाप टाइप्स, वो अच्छी टीम थी काफी. मुझे याद है लास्ट में आए थे भाई, हमारे आधी टीम इंजर्ड थी. लास्ट में आए थे फ्रैंको डी सैंटो, और आए थे मिरोस्लाव स्टॉक, और लैम्पार्ड वाज देयर. एक बॉल दिया भाई, पिंग 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 पिंग, गोल. और 2 गोल्स हुए थे लास्ट 3 मिनट में. यार कल ब्रेमन ने दिखाया यार, वर्डर ब्रेमन ने दिखाया बोरुसिया के साथ. व्हाई डू यू गिव अप इवन आफ्टर 2 goals? मतलब दैट इज द होल पॉइंट आई हैड. One thing is for sure, Chelsea midfield is like house of cards. If you remove Kante, then the whole house will crumble. वही है, बिल्कुल क्रम्बल किया. लॉजिक समझ, जेम्स को सेंटर बैक खिलाने का. वेल एग्जैक्टली भाई, जेम्स का बेस्ट बेस्ट वर्च्यू क्या है? कोई भी यार, कोई नया भी देखता ना फुटबॉल में, भाई हिज क्रॉसिंग इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. ही हैज बॉडी स्ट्रेंथ, ही हैज बेसिकली अ विंग बैक मेंटालिटी. तो प्ले हिम ऑन द बाईलाइन यार. व्हाई डू यू वांट टू प्ले हिम एज अ सेंटर बैक? हाँ, डर के लीड से, मतलब कम ऑन मैन. और लॉफ्टस चीक एज मच एज बढ़िया है यार, you can use him in midfield also. Give him Jorginho partnership यार. Without Kante Kovacic we are not going to fight for top 4. Exactly. देखो last week we had one of them, right? इसीलिए basically Loftus-Cheek was in wing back. Loftus-Cheek is primarily a midfielder. यार I have to agree there. Havertz half season को, Havertz पर आते यार भाई. यहाँ तो don't get me started. भाई आई नो दैट आई माइट बी नेम कॉलिंग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ज्यादा. और यस ऑफ कोर्स अगेन अगेन सेइंग लीड्स को डेफिनेटली क्रेडिट जाता है फॉर द वे दे प्लेड. जैसे मार, जितना मुझे गुस्सा आ रहा था, आई नो डेरेन भी है चैट में, हम लोग चैट कर रहे थे, आई नो दैट जैसे मार्श वाज ओवर डूइंग थिंग्स. मतलब ही वाज शोइंग दैट येलो कार्ड दीजिए अर्ली ऑन एंड ऑल दोस थिंग्स. आई नो दैट. एंड द मैटर ऑफ फैक्ट दैट मैच के पहले भी उन्होंने बोला था भाई हाउ कैन टुकल बी देयर, उनको रेड कार्ड मिला था एंड ऑल दैट. भाई टुकल लेस्टर के साथ नहीं होने वाले, लेट मी टेल यू, ओके, जैसे मार्श. बट एनीवे, having said that, by Kai Havertz, I defended this guy, that this guy basically was fantastic against Spurs. Only thing was finishing was missing, or that is the problem. So don't play with the number 9. हाँ, लेकिन बोया इंजर्ड थे तो खेलना ही था, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, तो that is okay. भाई एक, why are you running around like a headless chicken, bro? Why are you running around like a headless chicken? Havertz, you are a big strong lad यार. आप बेसिकली कुछ स्ट्रेंथ नहीं है क्या आपके पास? बेसिकली इतना इजी से सेकंड बॉल्स में वी वर गेटिंग बीटन. एंड यस, यू वुड से दैट गैलेगर आल्सो डिडंट कंट्रीब्यूट मच टू हेल्प जॉर्जिनियो एंड हैवर्ट्स, दैट इन बिटवीन.
भाई लेकिन गैलेगर वाज एटलीस्ट वांटिंग टू गो फॉर टैकल्स, ही वाज गोइंग फॉर इट, ही वाज विनिंग. हाँ, इट्स नॉट हिज नेचुरल पोजीशन नंबर 6, उसका नेचुरल पोजीशन नंबर 8 है. हैवर्ट्स का भी आप बता सकते हो, इट्स नॉट हिज नेचुरल पोजीशन नंबर 9, और नंबर 9 एंड हाफ जो टूकल बोलते हैं, भाई हिज नेचुरल पोजीशन इज नंबर 8. लेकिन again, main problem being that application, it is not the player, it is not the transfers. Yes, people say bhai hum number 9 kyun nahi laye abhi tak. I really feel that Havertz on his day can still be good. His application was missing today, simple as that. He was not there to win the second balls. पता नहीं क्या चीज से डर रहा था, या तो पता नहीं वापस से कोविड हो गया, क्या हो गया पता नहीं. या बिल्कुल सेकंड हाफ इट वाज 4-3. यहाँ पर मैं दिखाता हूँ भाई, सेकंड हाफ में वही है, बहुत लेट हुआ. आई कॉल्ड इट, इट वाज काइंड ऑफ एविडेंट. वही हमने पहले प्रेडिक्ट भी किया था, ये होना चाहिए था. लेकिन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज द फॉर्मेशन. वेल, फॉर्मेशन वाइज आई थिंक इट वाज बेटर. लेकिन वही है, इट डजंट कम टू फॉर्मेशंस एंड ट्रांसफर्स ओनली, इट कम्स टू द एप्लीकेशन. लीड्स वर देयर एंड देयर एंड देयर भाई, बिहाइंड योर बैक. वो नहीं जीतने दे रहे थे कुछ भी. और वहीं पर बेसिकली वी हैड टू यूज आवर हेड्स. We have to do a little bit of games management, calm down after the first goal, और वो नहीं किए. मतलब we were like so panicky ना, आज क्या ही तो बोले. हाँ, हक दिया भैया वॉकर और फोर्डन ने. अरे यहाँ भी हो रहा है यार. मतलब अगेन सेकंड हाफ हैज स्टार्टेड एज आई स्पीक, आई बिलीव. तो भाई कोई नहीं यार, मतलब न्यूकासल भाई लेट मी. और वही है डिफरेंस, आप देखिए न्यूकासल और चेल्सी के बीच में यही डिफरेंस है. आप देखिए द एप्लीकेशन ऑफ न्यूकासल आज. You check it out. Saint Maximin, not a finisher. Bhai, the guy is unplayable आज almost. लेकिन that's what is like. मतलब no, you're being reactionary. Kukurea does offer. Well, he does offer, but is he a goal scorer? Please check the stats, CFC Blues. That's what I'm saying. We expect or we want, because क्यों हमारे forwards नहीं score करते enough goals. They miss chances. हाँ, पहले तो creation भी कम हुआ था आज, वो अलग बात है. लेकिन first 5 minutes में we had 2 brilliant chances, right? And later on also कुकुरिया के पास भी चांस था. वो फर्स्ट टाइम शॉट लिए थे, बहुत डिफिकल्ट टेक्निक था, बट वही है, इट्स अ मैटर ऑफ मोमेंट्स. वो मोमेंट्स, फर्स्ट टाइम शॉट, वॉलीज, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दोस थिंग्स मैं बोल रहा हूं. चिलवेल इज बेटर देन कुकुरिया. आई एम नॉट सेइंग दैट चिलवेल इज अ बेटर विंग बैक. आई एम सेइंग दोस थिंग्स में चिलवेल इज बेटर. और बिकॉज वी डोंट स्कोर इनफ गोल्स विद द फॉरवर्ड लाइन, our dependency or wing backs to score goals, not just to create, to score goals is much more. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई स्टिल स्टिक बाय सीएफसी ब्लूज, इट्स माय व्यू, एंड दैट्स व्हाई मैं आ रहा हूँ यहाँ पर. बट रेस्पेक्ट योर व्यू टोटली. आई 100% बिलीव दैट अगर हम विंग बैक खेल रहे हैं, अगेन आई रिपीट, अगर हम विंग बैक सिस्टम खेल रहे हैं, इन दैट सिस्टम, बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन द गोल्स फ्रॉम फुल विंग बैक्स, वी हैव टू प्ले चिलवेल. व्हाई? बिकॉज आप देखिए, entire team is much more confident on Reece James than Chilwell, इतना, और than Kukurea in terms of attack. पूरा बेसिकली टाइम राइट साइड से ही हम अटैक करना कोशिश कर रहे थे. इट वाज सो प्रेडिक्टेबल. यू हैव टू हैव टू ऑप्शंस वहां पर. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. मतलब हाँ, आई अग्री देयर. Going forward, I 100% agree there. I don't disagree at all. Divyanshu, I agree 100% with you. Lekin, I cannot criticize him. I'm not criticizing him, CFC Blues, and anyone who's thinking that I'm criticizing Kukurea. I'm simply stating the facts जो चाहिए हमारे टीम में. First of all, I agree Kukurea should have started, but in a back four. We shouldn't have gone, a back three. Especially Jorginho को protection चाहिए था midfield में एक extra man के लिए. और go 3-5-2. That is what we should have gone. Anyway, भैया कoulibaly को second yellow, what is भाई दोनों ही येलो. चलो पहला येलो ईगो आ गया. सेकंड येलो में क्या था भाई? आप क्या सो रहे हो तो क्या? मतलब यू आर ऑलरेडी 3-0 डाउन, ठीक है, एंड you are supposed to be one of the most senior most members. Yes, you're new to the team, you're new to the club, you're new to the league, all that I 100% agree. Lekin at that point we have got a koulibaly in the defense to basically help our defense out, जो already inexperienced था, and Aspi wasn't starting today. So that was all the reason that Koulibaly shouldn't have done it. It was a blatant everyday and a Sunday wala foul. I won't even defend that foul. 100%. Now he's out of Leicester. Bhai, we don't have players. Is he thinking that Fofana आज आ रहा है और train करेगा एक हफ्ते में to become a next great Chelsea player or not? That is what I'm saying. That is why I'm reacting this way. अंकित भाई, what do you think? अगर एस्पी को स्टार्ट करता तो रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था? नहीं, I don't think so. Because again, I believe that एस्पी अगर करता in a back three, he is slow for right center back, considering Harrison's pace and press.
Secondly, अगर बैक फोर में करता तो ही इज नेवर अ राइट बैक हु प्लेज विद दैट प्रेस एंड पेस. इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर लीड्स ही शुड हैव बीन कमिंग ऑन द ऑफ द बेंच. वो करेक्ट था, लेकिन प्रॉब्लम था कि यार यू डिडंट यूटिलाइज जेम्स हु इज योर मेन आउटलेट. उनका मेन वेपन आपने यूज नहीं किया इनफ, बिकॉज अनलाइक टॉटनम हम मैं सोचा था विद पोजीशन हम खेलेंगे फोर द बैक, विदाउट पोजीशन हम खेलेंगे फाइव द बैक जो था अगेंस्ट टॉटनम, बट वी डिडंट डू दैट इन द फर्स्ट हाफ एंटायरली. Chilwell is better wing back. Exactly. That's all I'm trying to say in terms of Chelsea. Again, I would say Kukurea is possibly a better wing back. Lekin Chilwell, because we want a wing back to score goals. Sorry, Haaland hits the post, yeah, people. Haaland hits the post. I'm watching the match live also. Nice attempt by Haaland यहाँ पे. Every player was shit today. Manager also. I think one player मैं defend करना चाहूँगा खाली. Thiago Silva. I think Thiago Silva did well. I know his performance does not stand out always. लेकिन I think he kept his cool. That's all I can say. कुके वाज ओके इन माय ओपिनियन, ही वाज नॉट एब्सेंट एटलीस्ट, बस फिनिश नहीं. वही है ना, फिनिश हमें चाहिए. इतना डिपेंडेंसी यार हम चाहते. हमारे मेन गोल्स कहां से आए थे भाई? लास्ट मैच में भी डिफेंडर्स, लास्ट सीजन में भी किससे आए थे? डिफेंडर्स. तो वहां पर हमें चाहिए हमारे विंग बैक स्कोर करे, नहीं तो गो बैक फोर यार. अब क्या ही तो इतना गोल स्कोर कर रहे. और यार अगेन मैंने ट्वीट किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं टाइमिंग भी दिखा देता हूँ. मैं क्लियरली ट्वीट किया था भाई, वी कैन सिट एंड से दैट व्हाट आर द रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग. चलो कोई नहीं, आपका राय है. आई रिस्पेक्ट सर आंखों पर सीएफसी ब्लूज, बट अगेन आई बिलीव दैट ही इज अ बेटर विंग बैक. I don't. Did I say that Kukurea is not better than Chilwell? I said that Kukurea is not a goal scorer. Chilwell is a better goal scorer. We need our wing backs to score goals. That's the whole point I'm making. I hope you got it by now. I think the major problem is the players wanting to leave after the transfer window. We should have had a squad who will play for the badge. Yes, exactly. You know what? It's more the mentality, formations, players, choices. Was forget it. It's more about basically what we do with them. As in, what is it that we do after that? I don't think हम खाली formation खिला. It's not FIFA, right? We have to get the player mentality in. अरे CFC Fahim in the house, yeah. We did discuss pre-match, Fahim, bro. I know it's not good time right now, but again, should we be so reactionary or should we say just Leeds? What a terrific game. Hats off to you. And it's a bad day. But I think it's more than that because mentality is an issue. Bhai, goal ho gaya, yaar. What a goal by Newcastle, man. By Trippier. Trippier with a world-class goal. World-class free kick by Trippier. And yes, Newcastle are winning against Man City. That gives me some confidence as a Chelsea fan. Yes. So Newcastle is 3 and Man City 1. It's just 53 and a half minutes. But I think at St. James's Park, it's difficult for Man City to come back. That's my call. By Kylian Trippier, what a world-class goal. Again, it gives me some confidence as a Chelsea fan कि भाई Man City are also dropping points in Newcastle. लेकिन वही है, यहाँ पर application की problem है with Chelsea. Free kick, it was a world-class free kick. You have to give that all the thing. अरे talk MU, it happens, bro. It happens. As in being a Manchester United fan, also you know it. You should have shots. That's a common sense. Okay, yes, बिल्कुल shots का I agree. मतलब we were trying to basically again till that final third, the ball goes and then vanish. आ जाते Leeds players, get it, and we don't have enough shots. Absolutely. After Mendy, yeah, Mendy का ही यार, Mendy के बाद में क्या हो गया पता नहीं यार. That's where we need leaders यार. We need leaders who are voicing it out. We need more mentality. Character चाहिए, by character. Reece James talent is getting wasted. Right? बिल्कुल 100% agree यार. Again and again I'm saying, why are we letting Chalobah go on loan? Why did we almost let Emerson go? Emerson can play left center back as well. बाद में आए लास्ट में एकदम कुकुरिया लेफ्ट सेंटर बैक खेले, but it was too late. अरे सदमे में हूँ यार, कोई नहीं, होता है, just a game after all. Would Chelsea now pay 30 million for Oba? I think given the fact that they desperately need a center forward, you know what? I genuinely feel that even Oba might not help. It's more about the mentality, week in week out वाली mentality चाहिए हमें. चाहिए players who fight for the badge, players who basically fight for the second ball, or knowing that it's Leeds. I at least expected भाई Leeds से बहुत बहुत सालों बाद हारे, but ठीक है. The fact is, देखिए, clearly यहाँ पर issue है that I was thinking that okay, we turn up for the rivalry वाले games, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हो आज. So that is the most disappointing aspect. तो यहाँ पर it's more about एक हेड राइटर ट्रीटमेंट चाहिए यार हमें प्रॉपर. और प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव इनफ कैरेक्टर्स. इज ओबा दैट कैरेक्टर? नॉट रियली. सच में बोलूं तो भैया वो कोच ने थोड़ी बोला होगा मेंडी शुड हैव क्लियर सिंपली. या 100% आई एग्री. लेकिन प्लेइंग जनरली प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक का थोड़ा ज्यादा है, प्लेइंग कीपिंग पोजीशन का ज्यादा है इंस्टेड ऑफ जस्ट क्लियरिंग इट. वो जनरल थोड़ा मेंटालिटी है. बट अगेन मेंडी इज नॉट अ बेबी यार, उसको भी पता है एब्सोल्युटली आएगा.
अरे पता है यार, मेंडी यार उसको नॉयर बनने की क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, मेंडी इज अ कंपटीशन इफ टुकल डजंट ट्रस्ट। भाई आई एम हैप्पी दैट अभी तक केपा गए नहीं। ट्रस्ट मी, मे बी इट्स अ ब्लेसिंग डिसगाइज। यस, केपा इज नॉट वर्ल्ड क्लास, लेकिन भाई केपा आर्ग्यूबली आप बोलोगे इन फॉर्म ही इज बीन बेटर इन द लास्ट 7-8 months. Mendy by this, okay, no Lakaka, no Werner, Chelsea fan, who's your next target to blame? You know what, अजय भाई, मैं देखिए यहाँ पर एक और चीज मैंने बोला था, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ, मैं ट्वीट दिखा देता हूँ अपना। यू नो व्हाट, मतलब मुझे लग रहा है कि यार एम आई कोचिंग कोचिंग और टुकल इज कोचिंग, है ना, सेइंग वेरी बिग वर्ड्स यहाँ पे। बट भाई कोई भी बता सकता था, यहाँ पे कोई भी बता सकता था। आई एम लाइक, लेट मी सी कहाँ पर आई विल शो यू माय ट्वीट्स, मैंने क्या किया था ना। I'll just show you my tweets. Or this was basically after the first goal itself. After the first goal, मैंने ट्वीट किया था और मैं दिखाने वाला हूँ। You know, this will probably make the review, feel what it is. देखिए, यहाँ पर मैंने क्या बोला है भाई, shit happens. यहाँ पर और बड़ा करते हैं थोड़ा, एक सेकंड रुकिए। Shit happens, but Mendy happening more often. ठीक है, Sterling giving unnecessary free kick resulting in a second, जो हमें पता है हमारी अकेलीज हील है, giving free kicks. It was crucial to keep 1-0 at halftime, लेकिन नहीं, it was a difficult game. You have to give credit to Leeds. First couple of chances in 5 minutes, it ain't working. We need goals. 4-3 in second half. Get Christian Pulisic for Kai. और मैं क्यों बोल रहा था? Because we needed someone to take on the Leeds players. We needed someone that, क्योंकि यार our wing backs were not doing enough, जो normally हम expect करते हैं. That was what is happening. Then उसके बाद में मैंने किया है, if there's a team in EPL that can be caught on counter, it probably is Leeds United. ठीक है, agree everyone? Problem is that they were 2-0 up, but we have to start afresh, or RLC wasn't working. This was half time, half time के just 1 minute पहले ही था in fact. Koulibaly on a yellow and early second half goal crucial. Jorginho needs protection. मैंने again at half time ही change करना चाहिए था, that we should have gone basically that change. ठीक है, फिर again Kai Havertz का मैंने कुछ tweet किया था because it wasn't working. फिर this was around the 55 minutes mark. As much as Kukurea is superb, I genuinely believe Chilwell's required when our forwards can't score. That's the point I'm making. We need folks with an eye for goal. Ziyech, Pulisic, Chile may come on. Mount Kai having a bad game today. देखिए यार, यहाँ पर even Gallagher I would say, because Gallagher चलो he's not a pure number 6, so I can at least get him that. लेकिन भाई clearly after this tweet, after 10 minutes, भाई Tuchel ने किया change, लेकिन किया when we were close to 70 minutes. It was too late by then. Ziyech, if he's in part of a squad, हाँ जाने वाले हैं, that's a different thing. But Ziyech is part of a squad right now, ना आप दे रहे हो ना salary उसको भाई. Yes, he might not have trained much, but he has been at that situations at basically a certain club for many years, more years than maybe an inexperienced player. हमको चाहिए someone who takes direct shots. हमको चाहिए था someone who basically pings that ball. और वहां पर far post में किसके पास है pace, किसके पास है height? No one has height आज के दिन में apart from Havertz, और Havertz हग रहे थे. तो who has pace? Pulisic. He is our obvious option. तो इतना देर क्यों किया भाई टॉमस टुकल? दैट इज ऑल माय पॉइंट आई एम मेकिंग यहाँ पर. और देखते हैं भाई, द एटमॉस्फेयर एलन रोड डेफिनेटली प्लेड अ रोल, आई कैन से दैट. बट यू नो व्हाट, दैट वाज एक्सपेक्टेड कृष्णा, दैट्स व्हाट मैं बोल रहा हूँ. इट वाज नॉट अ सरप्राइज. और इसलिए मैं मतलब इतना सरप्राइज हूँ, मतलब आई वाज लाइक, मतलब इज इट लाइक, you know, will Chelsea player after seeing that एक atmosphere, did they actually automatically want to react like this? नहीं ना, they didn't want to react like this. ये बाद में हुआ ना, ये बाद में हुआ. क्यों हुआ बाद में? द रीजन बीइंग दैट बिकॉज हमें लगा एक जोर का झटका. और भाई अच्छा यहाँ चांस हुआ मैन सिटी का, बाय द वे ऑलमोस्ट गोल हो गया, लेकिन नहीं, हमें लगा था एक जोर का झटका, वो झटका नहीं लगना चाहिए था. वी वर एक्सपेक्टिंग, इट्स एलन रोड, इट्स लीड्स यूनाइटेड, इट्स लीड्स चेल्सी राइवलरी. if we were not expecting to be pressed that much, तो हम basically we were not in the wrong, not in the right place. Simple as that. अरे हालैंड का गोल हुआ भाई, what a goal by Haaland with a volley यार, left foot volley. 3-2. yes, close range strike था, लेकिन what a game यार. न्यूकासल 3 मैन सिटी 2 हो गया भाई. look at that भाई, ये तो मैं वॉच लॉन्ग में तब्दील हो गया, बट कोई नहीं भाई. वो लीड प्लेड रियली वेल, चढ़ के खेल रही. बिल्कुल एग्जैक्टली प्रशांत, हम क्यों नहीं कर रहे थे, मेरा ये क्वेश्चन है, हम क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ, हमारे पास बेसिकली आप बोल सकते हो इतना हाइट नहीं है जितना बेसिकली लास्ट फ्यू सीजन में था. यहाँ पे वापस से गोल देख रहा हूँ मैन सिटी का, बाय द वे बढ़िया गोल था. न्यूकासल शुड हैव क्लियर दैट बॉल, बट एनीवे लेट्स सी इफ इट गोस टू वार फॉर हैंडबॉल. कर तो रहे, लेकिन हाँ, हम बेसिकली हमें जब पता है हमारा जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एलिमेंट, वो कौन है? रीस जेम्स, लॉफ्टस चीक, डिफेंस ऑफ मिडफील्ड में कूलिबाली.
ठीक है, वो लोग स्ट्रांग है, तो दे शुड हैव बीन मोर सेंट्रल, राइट? Why was Loftus-Cheek playing in the wing? That's my whole question till about 55 minutes. आज क्या देखना पड़ गया है, अरे आई नो यार, क्या कर सकते, नो। Gallagher was composed, he was under pressure to fix his spot in the squad, heavy touches by Ruben and Havertz, बिल्कुल। और वही है, Gallagher is not your creator. Gallagher is best भाई, वो प्रेसिंग फ्रॉम अप फ्रंट होता है ना, दैट इज द बेस्ट। उनमें इतने बार बोल चुका है ये बात, मतलब आई नो पीपल आर सेइंग दैट नंबर 6 खेल सकते हैं, बट वी डोंट वांट समवन हु कैन खेल सकता है। ऑलरेडी वी आर एट अ सिचुएशन जब हमने 5 साल से लीग नहीं जीती है, वी हैव टू चैलेंज। So let's basically do more with that, और हमें चाहिए the best attributes जो हमें यूज करना है उनको। ओके, यहाँ पर और देख रहा हूँ मैं, बाय एंड अप बाय 4। यार ये कब हो गया यार, अपना कब होगा यार, होगा अपना टाइम भी आएगा, शौर्य, नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया भैया, व्हाट्स रॉन्ग विद चेल्सी टुडे आफ्टर सेकंड गोल, व्हाई प्रोफेशनल प्लेयर्स लूज देयर मेंटालिटी एंड हेड गोज डाउन। बिल्कुल यार, कमिंग डाउन फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस बहुत ही कम होता है चेल्सी में, दैट्स अ मेन प्रॉब्लम। इसलिए हमें चाहिए कैरेक्टर, और यहाँ पे कैरेक्टर भाई हालैंड दिखा रहे, लगता है ओ माय गॉड, व्हाट अ सेव, व्हाट अ सेव भाई। न्यूकासल गोलकीपर भाई, मतलब निक पोप, व्हाट अ सेव बाय न्यूकासल गोलकीपर, आई वुड से। भाई लास्ट मंथ है, हालैंड का ऑलमोस्ट गोल हो गया। लेट्स बी रियल, द मेन रीजन लास्ट ईयर एंड लास्ट मैच वाज मेंटालिटी। बिल्कुल बिल्कुल 100% श्रेय भाई, बिग अप, कैसे हो? मतलब आई नो इट डजंट फील गुड, बट इट इज व्हाट इट इज। आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक दिस फ्लूइड फ्रेंडशिप जस्ट क्रिएट्स, या 100% भाई। हैवर्ट्स एक जगह में तो आप ढंग से कर नहीं सकते हो। हाँ, मैंने से ढंग से नहीं कर सकते हो मींस कंसिस्टेंटली। Why do you have to dance around? Sterling is a new player. Huh? Once you three are settled, then you rotate a little bit more. We always used to do. We used to play. Remember Conte under? We used to do that. We used to have Pedro and Willian switching flanks. We used to have Hazard and Willian switching flanks. But it used to not happen like every 5 minutes. होता था भाई, हर 15 मिनट के बाद में होता था, और दैट इज व्हाट यू सपोज टू डू। और floating system is fine, but you need a focal point at some point. Marcus on attacking wise better than Kukurea. Hi Ankit, Chelsea were poor today. Del Boy Gunner TV, big up, thanks for joining. And yes, I know Gunners are doing really well. Doesn't feel good as a Chelsea fan, but again, it's just a match. Let's see. वो भी है definitely यार, defensively मैं नहीं बोल रहा हूँ, attacking wise. नेमार जूनियर फॉर क्लब और कंट्री चूज, भाई मतलब मैं तो बोलूंगा फॉर कंट्री यार, डेफिनेटली ही इज मच बेटर फॉर कंट्री इन माय ओपिनियन, मच मोर सेंट्रली फोकस्ड, जहां पर ही टेक्स थिंग्स बाय स्क्रफ द नेक। व्हाट अ बॉल बाय हालैंड, इज इट हालैंड और व्हाट भाई, किसने, बर्नार्डो सिल्वा गेट्स अ गोल, भाई किसने पास किया रे, डी ब्रुयना, ओ माय गॉड, 3-3 मैन सिटी यार, दैट इज व्हाट लेवल्स है, लुक एट दैट, 3-3 हो गया भाई मैन सिटी का। एंड यस, इट्स अ वॉच अलोंग फॉर पीपल हु माइट वॉच इट लेटर एज वेल। तो यस, आई एम रिएक्टिंग, लेकिन साथ साथ में मैच भी चल रहा है भाई। इट वाज 3-1 न्यूकासल बीटिंग मैन सिटी, देन गोइंग इन द शेल, और एज अ मैन सिटी अटैक करते हुए भाई विंग प्ले किया अच्छा, और आया मिडफील्ड में टू बेसिकली या इट इज 100% नंबर 17 डी ब्रुयना है भाई, व्हाट अ पास मैन। Mourinho, I love you man, but why did you let De Bruyne go? Every match में सेम चीज बोलता हूँ भाई, बर्नार्डो सिल्वा staying at Man City, why this I don't know. Chalobah has pace, he is very good at the ball, why not play him and instead of RLC? That's a good point. हमने शायद ट्राई भी किया है क्या चालोबा को एट राइट बैक, ही कैन प्ले राइट बैक, जस्ट सो यू नो। यस, ही इन एकेडमी डेज वो खेलते थे कभी कभी राइट बैक। कुकरेया शुड हैव गॉट, अगेन मे बी एम रिएक्शनली, आप बोलोगे आफ्टर टॉटनम हॉटस्पर के साथ जो लॉफ्टस-चीक ने किया, he deserved a start. I'm not saying he didn't deserve a start. I'm saying that the way that he was played, even consistently, वो 50 minutes के लिए वही रोल खेल रहे थे, that was wrong. Should have got at least a shot on target. It was left foot, he should have scored. Yeah, shot on target is what is fair. Scored भाई थोड़ा सा harsh है। एटलेटिको मैड्रिड अंकित आप 5 सेकंड पीछे चल रहे हो, किससे पीछे चल रहे हो यार? मैं मैच में तो थोड़ा डिले होता ही यार। This season is going to be one of the heartbreaking season for many title hopeful team, because some mid-table teams are looking more dangerous. Why EPL? It always happens. Let's see, Shreya, I hope so. Problem वही है ना, हमें चाहिए mentality week in week out वाला यार। चलो, bad days नहीं यार, मैन सिटी ने सुधार लिया वही। Would Chelsea have done this unless it was a Champions League quarter finals or Champions League semi final, और भाई एक और शॉट हुआ almost goal by De Bruyne, you know, हमें चाहिए कप गेम। व्हाई डू वी टर्न अप फॉर कप्स, और व्हाई डू वी टर्न अप फॉर बेसिकली डार्बीज एंड नॉट एवरी डे? दैट इज माय थिंग। और आज तो भाई डार्बी जैसी था, लीड्स के साथ प्रॉपर राइवलरी थी भाई। मेंडी, जेम्स और हालैंड
जिन्होंने स्कैम किया मुझे एफपीएल ने। लाइनअप देखकर ही लग रहा था कि पिट जाएंगे आज लीड्स से। भाई वो ये नेगेटिव लाइनअप थी, रादर फॉर्मेशन। ओके, सब बड़े टीम्स या का नहीं यार, सबका नहीं हुआ। मैन सिटी, आई नो आई एम लेट इन द कमेंट्स, लेकिन वही है। इट इज टाइम वी बेंच मेंडी, नेक्स्ट मैच इज पनिशमेंट, इट विल आल्सो गिव केपा अनदर अपॉर्चुनिटी। Probably, यार वही है, मतलब are you waiting for a mistake like this in a proper cup game? I don't know. Tuchel to team in locker room after end, क्या ये चैंपियंस के चेहरे हैं भाई? चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड है लिटरली। कांते की याद बढ़िया है बिल्कुल। इफ ओबा डजंट कम, गेट टोनी और समवन एल्स। हमें चाहिए भाई, मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर, वी नीड अ बैकअप फॉर अ सेंटर बैक अगर चालोबा जा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड दैट, ठीक है। सेकेंडली वी नीड समवन हु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग बॉल एज वेल एज हैविंग लेग्स अपार्ट फ्रॉम कोवाचिच एंड कांटे इन मिडफील्ड। वी कैन नॉट रिलाई ऑन जॉर्जिनियो एज मच एज वो अच्छे जो करते हैं, बट इनफ नहीं करते। और दैट इज मैं बोलूंगा। और यहाँ पर मैं बोलूंगा थोड़ा रेफरी भी थोड़ा सा वापस से सॉफ्ट है, लेकिन अगेन लीड्स वर प्रेसिंग, सो यू हैव टू गिव लीड्स ऑल द क्रेडिट। मिडफील्ड इंजरीज थॉट्स नाउ, वही है, हमें हमें चाहिए एक मिडफील्डर। मैं तो बोल दिया हूँ, वी नीड अ मिडफील्डर एज वेल। आई एम सीरियसली सेइंग Gallagher is not a number 6. I'm again and again saying Gallagher is not a number 6. You can play there. You are not using the best of Gallagher. He is more like a Mason Mount. He's Mason Mount ka replica. He's not Kante ka replica. Let's get it right. Haaland, bilkul. FPL, Ankit, we should get someone like Neves. He plays some. Yes, yeah. Neves is a good shout, definitely. और forward line में बोलिए भाई, मतलब forward line में can Aubameyang also do the job? I doubt it. I saw today's Gallagher and Kante. Yeah, bilkul. Kante rotate much freely, but today Gallagher was either cross passing or defending himself. मतलब वही ना, along with Jorginho, he needed one more third person. Yeah, he was doing too much. Okay. Bernardo Silva, yes, comebacks. Leaves this attack. Mata, Hazard, Oscar attack was so much better than shit. Yeah, बिल्कुल यार, मतलब talk about एक creativity, talk about basically being in the right position, the right time. भाई रीस जेम्स बेचारे जा भी रहे थे करेक्ट टाइम में, लेकिन रूबन लॉफ्टस-चीक वही है 2 सेकंड लेट पास करते हैं। अगेन मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ रूबन लॉफ्टस-चीक को, क्योंकि वो पोजीशन है ही नहीं, वो सीख रहे भाई। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आके सीख रहे राइट विंग बैक कैसे खेलते हैं। इमेजिन मगवायर, नहीं यार वो तो नहीं, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 3-3 हो गया यार, मतलब बिल्कुल है अटैकिंग वाइज। या अंकित भाई, midfield was in high press. Jorginho can't handle high press. Only Kova and N'Golo Kante can do this. Well, Jorginho can. Problem is वहां पर pace and strength दोनों था, तो वहां पर आई थिंक इनफ टाइम दिया ही नहीं। और बेसिकली ही वाज आल्सो गेटिंग, एक होता है ना फिजिकल एलिमेंट ही कम था, सिंपल एज दैट। तो वी नीड अनदर मिडफील्डर 100%। बाय न्यूज ऑफ, हाँ ये न्यूज आ रही है, लेकिन आई डाउट इट। मैं बात कर रहा हूँ काफी सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस से, तो आई बिलीव दैट देयर, एंड आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन द यूके एज वेल, तो आई बिलीव इट माइट नॉट गो टू द लेवल दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो हो सकता है मैच विल गो ऑन एज एक्सपेक्टेड, लेट्स सी। या बिल्कुल यार, चेल्सी मिसिंग द हंगर, वो ये हंगर बिग टाइम मिसिंग कर रहे हैं। मतलब आप लोग बोलिए यार, मतलब ये कहाँ कहाँ से चेंज करेंगे? आई नो हम रेट कर सकते हैं प्लेयर्स को, मतलब आफ्टर दिस परफॉर्मेंस हु आर द पीपल इन योर ओपिनियन जो चेल्सी को ड्रॉप करना चाहिए इन द नेक्स्ट गेम? और ये नेक्स्ट गेम लेस्टर के साथ है, ट्रस्ट मी एंड हियर माय वर्ड्स केयरफुली। लेस्टर जो हग रही है, जो इनके पास इतने सारे प्रॉब्लम्स है, नेक्स्ट वीक खेलेंगे लाइक लीड्स वर टुडे, लाइक दे आर द बार्सिलोना ऑफ द वर्ल्ड। मैं बोल रहा हूँ ऐसे खेलेंगे प्रॉपर। दैट इज व्हाट हैपेंस, इट्स वेरी मच अ चेल्सी थिंग। You know what? From today's performance again, all I have to do is I have to rate Thiago Silva. Thiago Silva, big up भाई, मतलब अच्छा किया आपने। He is our captain material. I think I would also consider making Thiago Silva our captain for this season. सच में मैं बोल रहा हूँ। As much as Jorginho is our captain और वो koulibaly के साथ खेले हैं, when Aspi is not on the pitch, I really genuinely believe that Jorginho does not affect the team as much as basically a Thiago Silva. आप लोग बोलिए, डू यू एग्री और नॉट? डू वी नीड अ चेंज ऑफ लीडरशिप? और गोल हो गया भाई, नहीं बचा लिया। 70 मिनट बढ़िया चांस यहाँ पे गुंडोगन का, लेकिन ऑफ साइड था। चलो 3 ऑल ही अभी तक। मेंडी, गैलेगर, ये लोग बेसिकली बाहर होंगे, इज व्हाट यू सेइंग। डोंट टेक मी रॉन्ग, बट पूरा मैच में एक वक्त दिखा जो जब मिडफील्ड में शेप मेंटेन हुआ, हर बार विंग प्ले, वो भी वही है। शायद सही बोला आपने, इतना बेसिकली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि चेल्सी का पास छुपा सा प्रेडिक्ट कर सकते हो, या बीच में और मैं टूकल, आई नो आज थोड़ा सा ज्यादा टूकल के अगेंस्ट बोल रहा हूं। अगेन आई लव टूकल, आई नो दैट इज अ ब्रिलियंट टैक्टिशियन, लेकिन उसको करना चाहिए वो टैक्टिक्स ट्राई ऑफ द पिच,
not when you are in the middle of a game, when you are towards the end of the game. He needs to be ready with that. और वो क्यों, एक पॉइंट आया था, वी वर पासिंग टू डेथ, ठीक है, बीच में हमने ट्राई किया टू काइंड ऑफ बीट दैट लीड्स वाला प्रेस। तो क्या हुआ, वी वर ट्राइंग टू कीप द बॉल एज मच। फिर बाद में कुलीबाली पर आई थिंक एरनसन चढ़े हुए थे पूरा, वी नो दैट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय एरनसन। और वहां पर एट दैट मोमेंट व्हाट हैपेंड, कुलीबाली डिसाइडेड लेट्स जस्ट क्लियर टू द फ्रंट लाइन, और वहां पर फ्रंट लाइन में कोई था ही नहीं भागते हुए। और वहां पर इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट द फॉरवर्ड्स, टूकल वाज शाउटिंग एट कुलीबाली दैट भाई तू क्यों अपवर्ड थ्रू बॉल क्यों ट्राई किया, रियली वी वांट दैट मोर, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ। बट एनीवे, अगर आई एम काइंड ऑफ मिसिंग लुकाकू थ्रेडेड बॉक्स, व्हाट, यहां पर मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यस आई नो काफी लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं इसमें। what? I'm not missing Lukaku in the box for scoring. I'm missing Lukaku for defending. मतलब गौर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सेट पीसेस में वी आर टेरिबल वाइल डिफेंडिंग सेट पीसेस। व्हाट इज इट? हर मोमेंट सेट पीस होता है, फ्री किक होता है, लगता है भाई गोल होगा। व्हाट इज दैट? वी नीड अ सेट पीस कोच डिफेंडिंग, और वी नीड समवन ऑफ द इल्क ऑफ लुकाकू जो भाई डिफेंड करे। और यही है, when you have the height like Havertz and RLC, they don't use their height enough. People who are really tall or really strong in the head are only Koulibaly और Thiago Silva. आपके खाली सेंटर बैक्स, we need more physical presence. I agree with that, Darren, लेकिन not only attacking wise but defensively as well. Havertz back by Tuchel, पर कब तक he has to show up? वही आज तो भाई ऑप्शन नहीं था निखिल, लेकिन वही है, he was on the pitch because of such a shitty performance because there was no one else. और हमें चाहिए था someone to be the end of Ziyech's crosses towards the end. Okay, what are we giving new contract to Mendy for? Is he the one? Well, I won't say cost the Champions League last year because there were times that he did very well as well. Lekin he did more bad than good in the last 7 months. I understand that. Having said that, I think I want Mendy. He was brilliant. लेकिन वो ये he needs competition, और maybe at pure number one वाला चीज है। चले रेड कार्ड हो गया भाई, यहाँ पे रेड कार्ड है। I think Trippier gets a red card. I think, is it Trippier? What is this यार? Man City यार, Newcastle you gave it away यार। अब Man City जीतने वाली है। रेड कार्ड हो गया पीपल। यस, यहाँ पे गेम भी चल रहा है फॉर पीपल जॉइनिंग लेट। एंड अगेन भाई मैंने बोला नहीं, बट आई होप द लाइक्स हैव गॉन अप। यहाँ पे रेड कार्ड मिलने के बाद मैन सिटी प्लेयर्स उसको हक कर रहे हैं। क्या चल रहा है भाई? ये किया क्या, इसने किया क्या? मैं से वेट कर रहा हूँ। बिग अप टू मुजिद लुमान्यू सोबिक, बिल्कुल फरहान। अच्छा भाई, इतना बुरा चैलेंज था क्या? यस, इट वाज ओवर द, मतलब फीट वर अबव द ग्राउंड 100%, बट लास्ट मैन था क्या? He wasn't the last man as well. Shin basically hit the shin, not the knee. He didn't hit the knee. जो पकड़ रहे डिप्लॉय ना, he hit the shin. पता नहीं यार, मतलब मेरे भी है यार, मेरे भी है ट्रिपियर, मेरे भी है एफपीएल में। हाँ, गोल भी किया, सेंड ऑफ भी हो गया। If Todd Boehly overpays for Fofana after today's performance, you know what? भाई बाकी सब क्लब्स they are going to wait. भाई ओवरटर्न तो शायद ही होगा। हाँ, नी है यार, नी है, सॉरी माय बैड। Okay, he's actually looking it. I think may not be red. Looks like he's looking at. लेकिन वही है, it wasn't looking like it last man, 100% last man नहीं था, और it wasn't, मतलब aggressive नहीं था, aggressive नहीं बोल सकते ना, it wasn't aggressive और it wasn't last man। तो अगर वो रेड कार्ड नहीं देते इनिशियली, then it wouldn't have been overturned। लेकिन रेड कार्ड दे दिए तो will he overturn it? Not a red card. Probably I would say रेड कार्ड नहीं है, fair and square अगर मुझे आप पूछो तो। Because yes, उन्होंने मारा है नी को, लेकिन मारा नहीं, it was more like he went above the ball, absolutely he didn't go for the ball, लेकिन he wasn't last man और इतना physically assaulting वाला challenge नहीं था। तो थोड़ा I'm saying that it's probably a yellow, it's a orange card, it should have been between yellow and red। दोनों ही जगह you cannot really argue much, but looks like he's going to change it। Yeah, he's going to change it। चलो yellow card दे दिया भाई, न्यूकासल बच गए just about। येलो कार्ड है। अंकित इज बेंडी टर्निंग आउट टू बी लाइक दैट, ही हैज नो कंपटीशन। वेल एग्जैक्टली वही है, ही इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर एट टाइम्स। प्रॉब्लम इज दैट व्हिच केपा इजंट, लेकिन केपा इज अ मच बेटर बॉल प्लेयर, वी ऑल नो दैट। विंग प्ले ही करवाना था तो जेम्स को क्यों खिलाया उतना आगे? जिएश से स्टार्ट, बिल्कुल वही है ना, जिएश को तो भूल ही गए यार। जिएश, हाँ डिफेंसिवली काफी इश्यूज है जिएश के साथ, लेकिन भाई अटैकिंग वाइज में ही कैन डिस्ट्रीब्यूट दोज बॉल्स, और हमें चाहिए जिएश। और मैं तो बोलता हूँ पुलिसिक भी, स्पेशली जब ब्रोया इंजर्ड थे और प्लस द फैक्ट दैट हावर्ड्स हग रहे थे।
मतलब नॉट टू स्टार्ट एटलीस्ट भाई, थोड़ा जल्दी सब्स्टिट्यूशन करते. It's necessary to have goalkeeper who's very good in the ball. Yeah, it's a reality of things. But again, I won't say Mendy is terrible. It's just that his form has been pathetic. When De Bruyne runs, expect him to put the ball right into the, yeah. Ankit, are you okay with Tuchel's system? नहीं. Anshul, I'm not okay. भाई आप अगर मुझे सुनियो ना अंशुल, on every channel, on my streams, on दोनों ही मेरे channels में भी मैंने time and again बोला है that Chelsea भाई, I know we won the Champions League, we won the Super Cup, we won the Club World Cup, fair enough. लेकिन भाई 1.5 साल के लॉरेल्स में आप जी रहे हो. आपको बेसिकली बहाना था अच्छा द स्टार्ट ऑफ द सीजन टू गो फॉर द बैक. यस, अगेंस्ट स्पर्स दिखा था, तो आई वाज वेरी पॉजिटिव दैट इसमें भी आप प्रीव्यू में देखो तो मैंने बोला था भाई वही कंटिन्यू करो, स्टार्ट विद द फोर एट द बैक विद थ्री इन मिडफील्ड एंड देन यू कैन चेंज बेस्ड ऑन द गेम. लेकिन नहीं, आई थिंक वही है, इट्स मोर अबाउट अस नॉट हैविंग इनफ क्रिएटिविटी. एंड प्लस अभी यार विंग बैक में भी अलोंजो नहीं है, वहाँ डिफेंसिवली बहुत ही खराब है, लेकिन अटैकिंग वाइज में डू वी हैव ऑल द प्रेशर ओनली ऑन रीस जेम्स टू स्कोर गोल्स? वो बहुत अनफेयर होगा. कम ऑन, गेट नवाज इज ब्रिलियंट बेटर देन मेंडी. बेल नवाज नहीं आने वाले, लेट मी टेल यू, बिकॉज केपा को बेचना इजी नहीं है इतने सैलरी में. Don't you think nowadays it's necessary to have goalkeeper? Yeah, बिल्कुल. The only goalkeepers I've seen is a good ball distribution rate are Allison and Neuer. Well, है काफी लोग हैं, लेकिन वही है, it depends on basically you know the confidence in them. गोल हो गया यार लगता है. अरे बच गया यार. न्यूकासल डिफेंडेड जस्ट अबाउट 77 मिनट में एक और चांस. मैन सिटी का आने वाला है गोल 100%. Wow, let's see. How come ever attacker complain about tool system? Well, there is an issue, certainly there is an issue, लेकिन भाई you cannot उस आड़ में नहीं जी सकते ना डेरिन. आप देखिए, when was the last time when you're convinced by all three attackers playing for Chelsea? I don't even remember. Maybe Champions League loss against Real Madrid. That's what I would say. Proper CDM and striker, well, बिल्कुल, and backup center back भी. भाई टूकल को इस गेम को कंबाइन करना पड़ेगा rather than saying anything. Tuchel should gather senior players, उनके साथ लेके players को motivate करो. Good thing is it's August. It's looking like December for Chelsea just after one game. Is this decade's biggest mystery? Oh, I won't see. Tournament football is different. Lumani, tournament football is totally different. Well, week in football is totally different. In fact, we were very good in that. Let's be honest. First Champions League, I agree. Second Champions League, we were fantastic. I'm not going to buy that, Lumani. I love you, but the fact is, if you're saying that the biggest mystery, I don't agree with the second Champions League. We were fantastic, simply put. अच्छा हुआ मेंडी ने हगा अभी चैंपियंस लीग और कप्स में नहीं करेगा. लेट्स सी. मतलब लास्ट सीजन में 2-3 बार हुआ था. आई रिमेंबर वेस्ट हैम के साथ एक हुआ था, देन बाद में ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड, यू ऑल रिमेंबर. तो काफी सारी चीज हुए थे यार. व्हाई नो वन इज गोइंग फॉर टैप्सोबा? ही इज अ गुड विद बॉल प्लेइंग. चेल्सी कैन आल्सो गो फॉर हिम. भाई हम तो स्काउट करते ही नहीं यार. वी डोंट हैव स्काउट. हम जाते हैं प्लेयर्स हु आर लिंक्ड बाय जर्नलिस्ट, players who are linked by fans, and of course players who are generally having agents who are able to market them. वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार हमारे एक इतने सारे चेंजेस हो ना, इट्स अ मेजर इशू राइट नाउ. बट लेट मी सी इफ आई कैन गेट अ पैनल, बिकॉज मैंने किया था काफी लोग को मैसेज, अगर फ्री है तो आ जाओ भाई, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो तो. इट सेंट अ लॉट. आई एम जस्ट चेकिंग माय मैसेजेस क्विकली पीपल. अगर कोई फ्री है तो देखते हैं, नहीं तो अगेन आई विल जस्ट कंटिन्यू विद दिस as it is, right? चलो कोई नहीं. People again, do not forget to like the stream यार. It definitely helps. Certainly helps me and the channel. And of course, big up to all the members and mods especially. And yes भाई, आज तो प्रेडिक्शन लीग हो गया, FPL हो गया भाई, सबका वाट लग गया. मतलब सिंपली पुट, आप देखिए न्यूकासल 3, मैन सिटी 3, चेल्सी 0, लीड्स 3. बेस्ट अटैक हजार्ड, कोस्टा, विलियन. आई थिंक पेड्रो जो जो थे ना इसके बाद भी, आफ्टर हजार्ड लेफ्ट, आई थिंक अंडर लैम्पार्ड we did decently for that season as an attacking force, in my opinion. By now Chelsea players can exactly understand the pain of Manchester fans. एक ही मैच है, I don't think it's as bad, लेकिन I think it's close because वही है, week in week out mentality, negative formations, going in the shell, not having that character, वो सब issues है, which is kind of common. मैं agree करता हूँ. Well, let's see. By P Morton, I don't know. मतलब you can say, but having said that, there are a lot of question marks on Tuchel which will come इसके बाद में. देखिए यार, आप बोलोगे ट्रांसफर्स, अभी भी यार काफी सारे ट्वीट्स में देख रहा हूँ भाई, व्हाट अबाउट ट्रांसफर्स, वी शुड गो फॉर दिस, गो फॉर दैट. लेकिन आई डोंट थिंक इट विल चेंज अंटिल वो एक प्रॉपर एक वर्टिकल पासिंग हो इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग. वो एक पॉजिटिव
एनर्जी हो जस्ट अबाउट वांटिंग टू विन नो मैटर व्हाट, किसी भी सिचुएशन से आप जीत सकते हो। मतलब कोलीबाली ने जो किया 3-0 के बाद में, आप एक्सपेक्ट करोगे फॉर सच अ सीनियर प्लेयर डूइंग दैट? आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल। एंड मेनी अदर प्लेयर्स यार, मतलब दे वर ड्रॉपिंग देयर शोल्डर्स भाई। सब लोग निकोलस अनिल्का बन गए थे। निकोलस अनिल्का वाज अ ग्रेट प्लेयर, बट वो काफी अपना शोल्डर्स गिराते थे व्हेन थिंग्स वर नॉट गोइंग हिज वे। और वही दिख रहा था चेल्सी में, अपार्ट फ्रॉम मे बी त्यागो सिल्वा, मे बी जस्ट रीस जेम्स। और कौन था भाई प्लेयर सच में? कुकुरेया भाई ट्राई कर रहे थे, लेकिन वही अटैकिंग वाइज अगेन आई गो बैक टू द सेम थिंग। आई डोंट थिंक वो गोल्स स्कोर कर सकते हैं। हमें चाहिए विंग बैक्स कैन स्कोर, अदरवाइज यू प्ले कुकुरेया इन अ बैक फोर, दैट्स मच बेटर इन माय ओपिनियन। वेयर ही इज रियली गुड, एवरीवेयर इज वेरी गुड, बट आई थिंक इज मच बेटर देयर वहां पे, बिकॉज वहां पर एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर आएगा हु कैन प्रॉब्ली गेट सम शॉट्स ऑन टारगेट। और शॉट्स लो भाई, शॉट्स लो, be it second ball, why are you waiting for the referee to blow the whistle? Just go for it. नहीं नहीं तो मटाटा यूनाइटेड टेकिंग अ पन प्रॉपर। तो देखिए, व्हाट आई वेंट इज, आई डोंट वांट लुकाकू, आई वांट अ स्ट्राइकर हु कैन आल्सो हेल्प इन डिफेंस। इफ यू एक्चुअली सॉ बैक इन द डे, डीडीए ड्रॉगबा, Diego Costa, they did huge efforts in defense when we defended set pieces. They were very important. और लोग भूल रहे हैं। तो वी नीड अ स्ट्राइकर। कैन ओबामेयांग डू दैट? दैट नो इज द आंसर। इसलिए मैं बोल रहा था वो पॉइंट। आई डोंट वांट लुकाकू बैक, कम ऑन। डू यू थिंक वी नीड मिडफील्डर्स अटैकर्स फर्स्ट? वेल, मुझे चाहिए, सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ ना, आई डोंट थिंक वी नीड मिडफील्डर फर्स्ट, वी नीड अ चेंज ऑफ मेंटालिटी, वी नीड अ चेंज ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट, ठीक है? सेकेंडली आफ्टर दैट, क्योंकि हमारे पास इनफ मिडफील्डर्स है, यस आप बोलोगे यू डोंट हैव कवर, लेकिन वही ना 4-3-3, यू कैन एटलीस्ट कवर फॉर जॉर्जिनियो। छक्का मारा भाई, न्यूकासल ने गोल करना था, मिस कर दिया चांस प्रॉपर। कौन थे, शार थे क्या? कोई नहीं। सो यहाँ पर देखिए, तो दैट इज व्हाई वी हैव एटलीस्ट बॉडीज। वी डोंट इवन हैव एनीवन इन द स्ट्राइकिंग। जो है नंबर 9 पोजीशन में कोई है ही नहीं। वी नीड अ नंबर 9 ब्रो। या एज मच एज यू वुड से दैट चांस दो भाई, लेट्स बी ऑनेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक ही इज द गाय जो शुरू करेगा, ही विल गेट यू 25 गोल्स अ सीजन इन द लीग। सेकेंडली, pretty sure, and honestly speaking, Chelsea Football Club is not going to give Broya so many starting appearances. So let us get a proper number 9, और वो number 9 जो not just in attack can also help in set piece defending. That will be the best case scenario. Who is that? We should have scouted much earlier. Simple as that. Is the issue. लेकिन हाँ, अभी के लिए the main thing is we have to more than वही इंजरीज हो गया, ये हो गया, सब बहाने भाई। मैं बोल रहा हूँ, हाँ इट्स अ फैक्ट एज वेल, लेकिन उस आड़ में हम नहीं जी सकते। वी आर हैविंग इनफ पीपल इन द स्क्वाड टू काइंड ऑफ बी यूज्ड हैज, मे बी आप बोलोगे अटैकिंग में कोई नहीं है भाई, इन द लास्ट 3 मैचेस एज वेल हैज पुलिसिक एंड जीएश बीइंग यूज्ड इनफ? आई डोंट थिंक सो, especially when you have lost that pace, when you lost that ball passer, you need someone like that. तो हमें चाहिए more rotation, more basically rotation not in terms of positions within the game, हमें चाहिए rotations in terms of personnel, क्योंकि they are, कुछ players है ना, they are like एक हफ्ता बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, एक एक हफ्ता बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस होता है, तो वही हो रहा है। तो वी नीड मोर कंपटीशन फॉर प्लेसेस, बिल्कुल, और एक मेंटालिटी चाहिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगेन, तियागो सिल्वा, मैं तो बोलता हूँ कैप्टन बना दो यार। आप लोग बोलिए, Chelsea need ball playing goalkeeper. I think Mendy is the best goalkeeper in short stopping, but lack in ball distribution. वही है। एंड यार शॉर्ट स्टॉपिंग में भाई केपा अच्छे नहीं है, तो हसीब हमें चाहिए कॉम्बिनेशन दोनों का। भाई एक बात है, why haven't Tuchel introduced fresh legs at least 2 players after half time? वही है, मतलब Tuchel thought हम चेंज करते हैं mentality in terms of formation, which is fine. मेरा ये क्वेश्चन है शायद, why didn't we change that after after getting that first goal? Yes, वो क्लियर मिस्टेक था, लेकिन तब तक पता लग रहा था भाई व्हाट इज लीड्स डूइंग। वी नीडेड वन एक्स्ट्रा मैन इन मिडफील्ड, और वो हम नहीं कर पा रहे थे। ओके, ज़ाहा ले ले, चेल्सी एबिलिटी है अच्छी। वेल, ज़ाहा इज एक्चुअली अ गुड शाउट इन माय ओपिनियन। यस, ही इज नॉट योर प्रोलिफिक गोल स्कोरर बिल्कुल, लेकिन वो गोल्स भी करता है, वो सेट पीसेस में भी अच्छा है, वो सेट पीस डिफेंडिंग भी कर सकता है। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड शाउट। आई थिंक ज़ाहा इज समथिंग दैट आई वुड टेक एनी डे। आइडियल प्लेयर होगा राफेल लियाओ, सच में बोलता हूँ, तो ही कैन बेसिकली रियली फिनिश वेल, वो जा सकता है, उनका सीलिंग हायर है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव, वो अवेलेबल नहीं होंगे अभी। दैट्स व्हाट मैं बोलूंगा अभी। यस, प्रॉपर नंबर 9 चाहिए, तो भाई वी शुड हैव गॉन ऑल गन्स ब्लेजिंग फॉर लेवेंडोव्स्की। वही होना था, लेकिन अगेन ही डिडंट वांट टू कम, तो व्हाट कैन आई से, राइट? San Ronaldo and Zaha on the wings, and that solves a lot of problems in attack and defense. I would also say they are very good in clearing via headers, और वही मैं बोल रहा हूँ, वी आर मिसिंग आउट। Sterling's attitude and behavior, be
आई डोंट थिंक सो बटाट यूनाइटेड, मच लव टू अगेन, लेकिन मुझे लगता है ना, देखिए स्टर्लिंग फिर भी बाय द वे ऑफ साइड एक हुआ था जो अच्छा फिनिश किया था उसने, आई थिंक ही वाज स्टिल रनिंग हिज सॉक्स ऑफ, आई डोंट थिंक द एटीट्यूड एंड बिहेवियर वाज एन इश्यू एट ऑल. यस डेफिनेटली यार, उसने जो बोला है अगेंस्ट मैन सिटी, यू कैन मे बी हाइप इट अप, लेकिन उसने अच्छा चीज भी बोला था. आई थिंक द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट इज बीइंग क्लिप्ड. तो मुझे नहीं लगता स्टर्लिंग का एटीट्यूड बिहेवियर में कोई इश्यू है. इश्यू है दैट we are not having the right mentality game week in week out, we are not having the right players and the right formation. These are the three reasons. मेरे को लगता है 3 points रिव्यू यही है जो आपको देखो. और yes again for people joining late, मैंने किया है 3 points रिव्यू आज. नेम आई हैव जस्ट नेम्ड इट, वी पैनिक्ड, दैट इज मिस्टर मिंडी पैनिक्ड, और फिर पूरी टीम पैनिक की. फिर हमें मिला पेन ऑफ दैट लास्ट गोल, और फिर पॉटी कर दिया भाई कुलीबाली ने. ये किया है हमने 3 points रिव्यू में आज प्रॉपर. या हेलो दानिश भाई, कैसे हो? अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड चेल्सी आज भाई भाई यार क्या ये तो बोलोगे. चेल्सी शुड बाय ओबा फॉर 40 मिलियन, डियोंग फॉर 120 मिलियन. ओ बहुत ज्यादा है यार, बहुत ही ज्यादा है, कम ऑन. या बिल्कुल यार उसका, लेकिन पोजीशन क्या है? पी मॉर्टन प्लीज टेल मी व्हाट इज हैवर्ड्स पोजीशन. While as much as I also blame Tuchel, I should also blame Havertz. He awesome that he got us the Champions League winning goal. Awesome that he does well in certain big matches. But why doesn't he, apply himself more in whatever position he's playing? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क नहीं है आपके लिए? Where does he actually play? मतलब I don't see him as a winger. I don't see him as a proper cam as well. I would say somewhere 9.5 ही है यार, वही प्रॉब्लम उनका. He should himself figure it out. He should himself apply there more, और रोटेशन कम करिए, वो टूकल को बोलना पड़ेगा in terms of positions within the game. स्कमासा या ही वाज अ गुड शाउट डेफिनेटली, लेकिन वही है, वो फिनिश्ड आर्टिकल नहीं थे. हमें चाहिए प्रीमियर लीग प्रूवन थोड़ा सा एंड ऑल दोस थिंग्स. एटलीस्ट पुलिसिक ड्रॉज, या बिल्कुल पुलिसिक यार फिनिशिंग हकते हैं, बट एटलीस्ट ही ड्रॉज. वही है ना, समटाइम्स यू नीड टू विन दोस फ्री किक्स एज वेल इन द गेम. क्यों? बिकॉज दैट टेक्स दैट एक सेकंड एक्स्ट्रा, दैट गिव्स यू अ सेंस टू ब्रीथ. वो लीड्स नहीं कर पा रही थी, और वहीं पर वी वर ब्रिंगिंग ऑन लीड्स टू अस अगेन एंड अगेन. पुलिसिक होते तो मे बी he'll draw fouls, he'll buy some time. बिल्कुल. वेस्ट हैम मेड सम सेंसिबल ट्रांसफर्स, लेकिन भाई वेस्ट हैम हक दी यार. वेस्ट हैम बाय द वे वापस से हार गई आज ब्राइटन के अगेंस्ट. व्हाट अबाउट दैट? व्हाट डिड यू से? वी ऑल स्टिल नो व्हाट एग्जैक्टली हैवर्ट्स इज. द मैनेजर इज क्लूलेस. या वी डोंट नो एग्जैक्टली. हाँ वही है मेरा पॉइंट. क्या हैवर्ट्स करते क्या है यार? मतलब एज मच एज आई रियली लाइक द गाय, बहुत ही ज्यादा स्किलफुल है ऑन हिज जे, ही इज लाइक वाओ. ही सम डेज ही गिव्स यू द इंप्रेशन भाई वो होने वाले अपने बेसिकली बैलन डोर विनर, लेकिन सम डेज ही गिव्स यू द इंप्रेशन भाई ही इज सच अ रॉ फुटबॉलर. मतलब वही है. वेस्टेड तो नहीं बोलूंगा अंशुल, लेकिन वही है, वी हैव टू make use of him as maybe a squad player. That's a reality. He is someone who doesn't can be relied on. Week in week out नहीं rely कर सकते हम Havertz पे. Mendy did make a mistake on the first goal, but Leeds played well and they took attack to Chelsea. Hope this game was only one bad game. यार वही है दानिश, प्रॉब्लम ये mistake होते, it happens, shit happens. I just showed my tweet as well. लेकिन वही है ना, after that why go in your shell? Why panic? उसके बाद क्यों किया हमने पॉटी? दैट इज माय होल क्वेश्चन. मतलब वी वर प्लेइंग डिसेंटली अप टिल दैट पॉइंट, नॉट ग्रेट बट डिसेंटली. You never know Leeds defeat my well let's see. I hope it's a wake up call, but हमारा वही होता है like United, we don't turn a week in week out. वही हमारी problem है. That's why we're not close to winning the league anywhere. Havertz, okay, let's see if Tuchel wants a winger who can press and defend from front and good technically. Pedro Neto नहीं यार, वो finisher again, I don't call him a finisher to be very honest. हेलो तन्मय, कैसे हो भाई? मच लव एंड अगेन कमिसरेशंस भाई fellow Chelsea fans. Do you think we should bench Mount? Super Tommy Tuchel in the house. Bhai, Mount also had a sad game today. देखिए यार, Mount also, Super Tommy Tuchel, I would argue that he's not playing in his best position. Yes, he has done fantastic level in the last 24 months for us. Absolutely bonkers. लेकिन again his finishing is an issue. He is not your जो one on one लेकर beat करते डिफेंडर्स को, because something अलग चाहिए हमें फाइनल थर्ड में, वो नहीं कर पाते sometimes. Yes, his turns are world class, लेकिन वो ये Leeds will not give you the chance to the turn. तो वहां हमें चाहिए मोर स्किलफुल एलिमेंट. वहां चाहिए समवन टू गेट यू द फाउल्स और विन द फाउल्स, और वो नहीं कर पाते. पुलिसिक कुड हैव डन इट. तो माउंट को खिलाना चाहिए ना 4-3-3. सिंपल एज दैट. ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. सेम गोस फॉर गैलेगर, वो एक टिपिकल नंबर 8 है. Havertz without that UCL goal, I don't think so. Messi, but anyway, big up to Messi, of course. अरे मजाक कर रहे, पता है, no problem यार. Doesn't like to be hit, maybe. Cam, Cam, लेकिन कितने टीम्स खेलते हैं यार? P Morton, please tell me how many teams play Cam position आज के दिन में? बहुत ही कम है.
3-5-2 maybe we can try, but again why again 3 at the back, we are sussed out यार. दिस इज हाउ बिग टीम कम्स बैक, चेल्सी होती है यार, बिल्कुल यार. बहुत ही मैं स्लो जा रहा हूँ कमेंट में, थोड़ा सा मैं करने वाला हूँ स्किप. अरे फीफा टुनाइट नहीं यार, फीफा तो आज नहीं होगा. ओम मैं बहुत ही पिस्ड ऑफ. वहाँ हैविंग सेड दैट ओम, वेरी गुड पॉइंट. मैं जब भी हारता था ना चेल्सी के साथ, मैं यार पेल देता था वो फीफा में होते ही. दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू डू ऑलवेज व्हेन आई यूज्ड टू प्ले फीफा 2012 एंड 2013 2015 एटसेट्रा. नो, मैं हमेशा वो करता था कि भाई हार जाओ तो यार गुस्सा निकालो फीफा में, ऑपोजिशन के साथ 5-6 बार पेल दो उनको 5-6-0. वो करता तो था, लेकिन अगेन अभी यार मैं टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, आई डिड नॉट इवन हैव लंच. दैट्स हाउ बैड आई एम इन माय टाइमिंग्स. बट एनीवे कोई नहीं. मेंडी इन फ्रंट, वही चेल्सी वाले दिन में ना आई एम लाइक नहीं यार, पूरा फोकस उसमें रहता है. आज इतना वेट कर रहा था भाई, लीड्स पेलेंगे. लास्ट लास्ट वीक का टॉटनहम के साथ जो नाइंसाफी हुई लास्ट में हमारे साथ, भाई वी विल कम बैक एंड शो व्हाट वी आर. भाई वही है, व्हेन अ बिग टीम एंड आई से व्हेन दे आर लीग विनिंग चैंपियनशिप साइड्स जो थे विनिंग साइड्स, they when they get a loss, वो लोग कैसे come back. और yes, Tottenham match felt like a loss to me towards the end because of what happened, unfair. लेकिन आज totally fair. You have to give all the credit to Leeds. As much as I say that I hate Leeds, yes, मैं hate is a very strong word, but they are my main rival. So same time I have to give them all the credit in the world. Leeds deserves all the credit. I would have taken those 11 players in a heartbeat today playing for Chelsea. सच में बोल रहा हूँ मैं. Talk about this. Chalo, let's go player by player. Aronson. Talk about their Tyler Adams. These are two US internationals. ठीक है. कैप्टन अमेरिका पुलिसिक इज कैप्टन अमेरिका, रिमेंबर. और पुलिसिक आए थे और ही दो दो चांस थे, अच्छे चांस नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन he was played in midfield, he was played like a cam, he was played as a right midfielder. आज भी पता नहीं टूकल क्यों समझते नहीं, पुलिसिक इज मोर लाइक अ लेफ्ट विंगर रियली आज के दिन में. लेकिन एनीवे, तो ही वाज ट्राइंग टू विन फाउल्स, और वहां पर लीड्स इतना टैक्टिकली अच्छे से फाउल्स कर रही थी यार, रेफरी फाउल्स नहीं दे रहा था. दैट इज व्हाट यू हैव टू लर्न. बीइंग कैप्टन अमेरिका यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट एज वेल. तो यार एज मच एज आई एम अ पुलिसिक फैन टू सम एक्सटेंट, और मैं बोल रहा था भाई पुलिसिक को आना चाहिए था हाफ टाइम, फिर भी मैं बोलता हूँ भाई देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दिस लीड्स टीम. यस, इट्स जस्ट वन परफॉर्मेंस, अगेन मे बी वी आर ओवर रिएक्टिंग, लेकिन यू हैव टू गेट दैट इन चेल्सी मेंटालिटी. वो डॉग्ड मेंटालिटी होनी चाहिए हमारी. We cannot take things for granted even for a second, especially against a counter-attacking, high-pressing team like Leeds. Don't bench Waldo, but don't run him into the ground like last season also. Fair enough. Man United Liverpool, plan to hai Matata United again. I hope the match happens. We will try and do a pre-show and a watch along. Let's see. Depends on my health. My health hasn't been 100% last 1 week. Mein. Even now, to be honest, I am getting a headache. Maybe after seeing Chelsea, hakte way. I don't know. Lone Broya, change system to 4-3-3. Get Ivan Toney and Zaha with Sterling. It will be amazing. Anshul, I agree with that. I agree. बहुत अच्छा call है आपका. I agree. One question, Super Dominical. I have never seen Chelsea come back. Exactly my point. Super Dominical, आप शायद लेट ज्वाइन किए हो. मैं वही बोल रहा था भाई पहले हाफ एन आवर में, दैट मैंने खुद क्रिटिसाइज किया टूकल के सिस्टम को, टूकल के बेसिकली टैक्टिक्स को, लेट रिएक्शंस को मोर रिसेंटली. एज आई लव हिम, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है मेंटालिटी. It is mentality, or part of it you can also say it's manager's job to basically motivate them. लेकिन नहीं यार, back in the day we had so many national captains. आज के दिन भी you can argue that we have basically a Koulibaly, we have a Thiago Silva, we have a Jorginho, we have an Aspilicueta. These are all very senior players. लेकिन do they have that character? Maybe at best Thiago Silva, I would say. Okay, wow. Thanks for the news. यार सोर्स बताइए थोड़ा, लेकिन एक्सपेक्टेड था ना. दे वांटेड 30 मिलियन पाउंड, नहीं तो यार क्यों तो आप देने जाओगे आपके सेकंड स्ट्राइकर, जब स्पेशली व्हेन योर डिपाई इज आल्सो लीविंग. तो आई अंडरस्टैंड दैट टोटली, एंड आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो बाकी प्लेयर्स को, तो यू हैव टू गेट द राइट प्राइस फॉर हिम. बट मेरे ख्याल से चेल्सी पैनिक करेगी. टूकल जाएंगे फॉर मोर ऑफ हिज ट्रस्टेड प्लेयर्स, बिकॉज दीज प्लेयर्स आर नॉट गिविंग हिम वीक इन वीक आउट. तो ओबामयांग loves him, he loves Aubameyang, so I think he'll go for Aubameyang. मैं अभी भी समझता हूँ Aubameyang will not elevate us in terms of attacking wise. थोड़ा सा करेंगे लेकिन not as much as what we need. लेकिन हाँ, स्टॉप गैप है, टॉप 4 हम लेंगे. देखते, आई नो एक ही मैच है वापस से, लेकिन मैं हमेशा से बोला हूँ इस सीजन में टॉप 4 इज व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ चेल्सी फैन. लेकिन आई वुड आल्सो वांट अ कप विन प्लीज. यूसीएल ग्रुप स्टेजेस में हमें बायर्न मिला, तो अरे बाय द वे हम करेंगे यार. आई थिंक it's just a few days away, right? The draw, so we'll cover the draw for sure.
क्लब्स डिडंट गो फॉर कमारा एंड संगार, या वही है। चेल्सी का तो ये था दैट वी डिडंट गो बिकॉज वी वांटेड प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स। यार मैं रहता हूँ इंडिया में, डेफिनेटली बैंगलोर में रहता हूँ अभी, लेकिन हाँ डेफिनेटली आई हैव ट्रैवल्ड। सो आप कहाँ रहते हो बोलिए भाई? ऑलमोस्ट गोल हो गया नहीं? न्यूकासल डिफेंडिंग फॉर द लाइव्स, इट इज स्टॉपेज टाइम, और यहाँ पे सेंट मैक्सिमन काउंटर अटैक कर रहे हैं, लास्ट फ्यू सेकंड्स है। तब तक रहते हैं भाई स्ट्रीम में। एवरीवन अगेन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। भाई सेंट मैक्सिमन ने हक दिया लास्ट में, फाइनल पास रॉन्ग किया, और आई थिंक कम ऑन 97th मिनट चल रहा है, रेफरी को बजा देना चाहिए विसल यार। टाइम अप हो गया भाई, टाइम अप हो गया, बजा दो विसल। अगर गोल होता है ना, कंट्रोवर्शियल होगा अभी, अगर बाई चांस मैन सिटी का गोल होता है सच में। भाई क्या कर रहे हो? एक और ये वेट करेगा जब तक मैन सिटी शॉट नहीं मारेंगे ना। ओ जस्ट अबाउट सेव किया भाई, बजा दो मैन। स्टिल 96.5 मिनट्स हो गए, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा था। क्या क्या चीज का इतना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे? करेक्ट मी इफ आई मिस समथिंग। लेकिन अभी तक भी नहीं किया भाई, 97 मिनट्स हो गए ऑलमोस्ट, और अभी कर देंगे भाई। हो गया चलो, आई थिंक अभी हो जाएगा। ड्रॉ मैच भाई, 3-3 लुक्स लाइक। लीड्स विल विन। अनूप यस यू डिड से अगेन, मुझे लग नहीं रहा था, स्पेशली आफ्टर द स्पर्स परफॉर्मेंस, बट एनीवे Zaha doesn't pass. Zaha shoots na. That's the best part about him compared to others. To release your frustrations. बिल्कुल. Tuchel playing यार every one out of position. Reese at right center back, Gallagher in pivot, Sterling a striker. Come on, bhai, it's getting awful. I think we are not blaming Tuchel because of Champions League tax. यार मैंने तो काफी blame किया है. Please check out my stream from beginning. और spam मत करिए योगेंद्र सिंह, please. Thanks for coming on again. Do not forget to like the stream. Certainly helps. और yes, I hope we have gotten closer to 5K यार. 5K subs करा दीजिए. It was a target to get to it this week, so let's get there, please. Again, thanks a lot for people joining. Chilwell, I agree there. अगर wing back system खेल रहे तो Chilwell is better. अगर four the back खेल रहे तो Kukurea is better. Simple as that. Horses for courses. ओ भाई साहब, मुझे तो काफी खुश होंगे, खुश तो बहुत होंगे आज बायर्न फैंस। Anup, thanks for sharing that. भाई Depay is not leaving as well, Ankit. Okay, this is news भाई, मुझे कवर करना है। Yes, I was not too well, so I didn't cover a lot of news as usual, लेकिन फिर भी हमने काफी ट्राई किया है, and I'll again cover as well. No problem, no. Chelsea winning, आसिफ नहीं आ रहा यार, come on. Barcelona, let's see यार, again there are question marks, but I think more about ethics than money. अरे थैंक यू यार, एब्सोल्युटली आई एम गेटिंग बेटर, नो प्रॉब्लम। अरे यार सहज, क्या क्या बोल सकते हैं यार, मुंबई ओके चलो, नाइस। आई थिंक वी आर फॉरगेटिंग दैट मेंडी वाज ब्रॉट इन एज अ केपा कंपटीशन। आई डोंट थिंक ही इज नंबर 1 क्वालिटी सिंस दैट मैड्रिड गेम एट द ब्रिज। बिल्कुल आई एग्री। बाय द वे मैच हो गया भाई, न्यूकासल हैज ड्रॉन अगेंस्ट मैन सिटी। आर्सेनल टॉप ऑफ द लीग, is it for real? And Leeds are actually second. Okay, let me actually remind myself. By Leeds United, rival of Chelsea, rival of Manchester United, a team which actually, yes, I know, just 3 game weeks away. By Arsenal first, Leeds second, Tottenham third, Brighton fourth. आई नो दिस कैन बी भाई, एक क्लिप कर दो ये इसको, लेकिन दिस आई नो आर्सेनल लीड्स फैंस भाई, आप लोग तो भूलोगे नहीं ये मोमेंट, तो आप लोगों के लिए नॉट दैट आई लाइक इट, बट द फैक्ट इज वी हैव टू एक्सेप्ट, बिकॉज हम देख कर ही भाई प्लेयर्स को पता लगेगा क्या हो रहा है। हम कोई कप फुटबॉल नहीं खेल रहे यहाँ पे, दैट बेसिकली आप परफॉर्मेंस कर दो, आप एड्रेनलिन रश कर लो, एंड विल बी ओके एज फैंस। भाई यू नीड टू डू मोर, दैट इज व्हाट आई वुड से। ओ माय गॉड, लुक एट दैट यार, लुक एट दैट टेबल, I'm like shocked, spellbound एकदम। या बिल्कुल ये, would you think transfer market should stop before starting of league or not? हसीब, Arsene Wenger also always wanted it। यार मुझे नहीं लगता, बिकॉज यार देखिए, प्री सीजन में एक चीज होता है, और सीजन शुरू होने के बाद आपका एप्लीकेशन अलग होता है। सीजन शुरू होने के बाद देयर आर सम रियलाइजेशन दैट एवरी क्लब हैज व्हाट अ प्लेयर मोटिवेशन इज, ज्यादा कंपेयर टू प्री सीजन। सो आई थिंक जो होता है फेयर है। हाँ, वेरी डिफिकल्ट फॉर क्लब मैनेजर्स एक्सेट्रा टू मैनेज, लेकिन भाई आई थिंक होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा। आई डोंट थिंक दे शुड चेंज मच इन फुटबॉल, जो होता है होने दो। वाओ, लेट्स सी, मतलब I would not be satisfied with Kepa also, to be honest, because of long shots। अब पूरी दुनिया का मालूम है लॉन्ग शॉट्स में प्रॉब्लम है, लेकिन वही है, we might have to do that, वही है, to teach a lesson for timing। यार इतना ओवर प्ले कौन करता है भाई, आपको पता है, इतना अच्छा नहीं हो। यस डेफिनेटली मेसी यार, वही है, पढ़े थे, थैंक्स फॉर शेयरिंग इट स्पोर्ट। लेकिन वही है, वुड यू रिलाई ऑन दिस? लेट्स सी, टाइम विल टेल। सुबह हम वीडियो करेंगे अबाउट ट्रांसफर्स, अब देखना वो।
Mendy should stop thinking his prime manual lawyer and stick to what he's good at. This season so far is like an episode of Sandman. There's no way any other league is better than EPL. Yeah, bilkul. I agree. Lekin again, there are a lot of things that you would also recommend from other leagues, that we need some ball creators, we need some play creators, we need हम और वैसे मिलते हैं other leagues से, so we might have to invest ज़्यादा on that. जैसे जियेश. और एक और चीज मैं बोलूं, सबसे फनीएस्ट पार्ट क्या है टूकल का, द मोमेंट हम 4-3-3 गए ना, जियेश को नहीं लाए भाई. मतलब जियेश ही रॉक्स इन 4-3-3 बॉस. आप जियेश को इतना लेट ला रहे हो, तो व्हेन वी आर ऑलरेडी काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 3-0, दैट इज नॉट द पॉइंट इन माय ओपिनियन. आप बोलिए, आप लोग डू अग्री विद दैट और नॉट? But anyway, as much as I'm criticizing Tuchel, I really feel that it's more the mentality. Players have to lift themselves. They have to see that okay, एक तो कैप्टन शायद बदलना पड़ेगा यार. मुझे लगता है genuinely एसपी will not start many games. So why actually just change the club captain, bhai? Change the club captain, because Aspi, as much as I love him to the core, bhai, he's not a voice like a John Terry जो थे 2017 season में. हमें चाहिए someone on the pitch who's voicing. Jorginho anyway doesn't deserve to start every match in my opinion. Kovacic does. ठीक है. तो वहां पर वी नीड टू हैव अ थियागो सिल्वा गिवन द कैप्टन आर्मबैंड. हाँ, ही मे नॉट स्टार्ट एवरी गेम, लेकिन एटलीस्ट मेक हिम द क्लब कैप्टन. यार देखते हैं भाई, टाइम विल टेल. अभी भी टू यंग, आई वुड नॉट गिव अप ऑन हैवर्ट्स टोटली, लेकिन यार हमें वी शुड नॉट रिलाई ऑन हैवर्ट्स, दैट्स व्हाट आई वुड से. देखते हैं यार, देखते हैं. मतलब लेट्स सी. मतलब आई हैव टू से दैट वर्नर, आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड. आई अग्री विद टूकल्स डिसीजंस, मोस्ट ऑफ इट. लेकिन yeah, there is a thing to it. Why attackers are not all doing well after coming to Chelsea, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा. Absolutely. Yes, the Who Am I episode, by the way, is going to be this week for sure, 100%. Again, it was supposed to be on Friday, but because of certain reason, maybe I was unwell on the day as well. मैंने cancel किया था वो, because it was already set up. It is definitely already there planned for this week. I have to just confirm the availability and then मैं publish करूँगा. Thanks for reminding. MC enjoying भाई, हंसिए भाई, कोई नहीं. But Premier League, man, it is what it gives you. Football, that's why we love football. लेकिन आज के दिन में as a Chelsea fan, I will not. Only thing is, भाई, Man City has dropped some points, लेकिन वही है, Chelsea ने fight नहीं दिखाया यार वापस से. That's the worst part. Leeds just outrun us. We were not close. Mr. Bolly, don't ask. Just pay for Harry Maguire. No way, no way. Wow, ये देखिए. Oh my God. Yeah, CR7 नहीं आ रहे अब. That is a fact. Or we might have to overpay for Aubameyang. That's what happens. शशांक सिन्हा बोल रहे हैं, we need to change formation. We are asking wing back to create instead of Cam. यार सोचिए, Reece James is your best attacker. That is happening from a season now. मतलब is it a real thing or what? मैं क्या ही बोलूं यार, मैं इसमें क्या ही तो बोलूं. और yes, Sterling is a direct runner भाई, लेकिन when you are making him the final line of forward, तो वो भी नहीं कर पा रहे यार. मतलब we need more than that. We need more. Certainly hard-working midfielders, I understand भाई. और funniest part क्या है ना, after all this, Tuchel went for Anthony Gordon. Imagine. Gordon is not a bad player. बहुत अच्छे player बन सकते हैं, but he's in the ilk of Mount और Gallagher. हमें चाहिए या तो एक प्रॉपर विंगर, या तो हमें चाहिए प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड. आई डोंट वांट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, आई वांट मास्टर ऑफ वन यार. वो चाहिए हमें. दैट इज व्हाट वी वांट. एंड वी नीड सम एक्सपीरियंस, सम मेंटालिटी, सम कैरेक्टर, और जो हमें डिफेंस में भी हेल्प करे इवन एज एन अटैकर, क्योंकि हमें चाहिए दैट स्ट्रेंथ इज मिसिंग इन द फाइनल थर्ड. ओ यस यस, ये शाउट आउट है भाई मेसी को. एंड यस, मानव भाई आप सेकंड हो गए हो इस वीक, बट कोई नहीं. होपफुली विल बी publishing after tomorrow. क्या है after game week 3 the prediction league के scores. और yes, for people out there who are still watching, again do not forget to like, share, subscribe. Yes, I have been reacting last सवा घंटा से almost on Chelsea, but a little bit on the Newcastle game. By do you think Newcastle has shown enough in these 3 games to tell that Newcastle are definitely going to be in the first half of the table, top of the table? आप क्या बोल रहे हो? Or do you think the fact that Man City, they did not start with the team जो आप basically expect you to win a game outright, maybe that is the reason why, because if I remember right, let me just check the team. अच्छा नहीं, आज तो बनारस वाला शुरू किया था यार, तो you cannot even say that. Okay, ये basically यार, ये इसलिए बाय द वे, ये विनर वापस से बोल रहा हूँ, मेंबर्स ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी के लिए है ये प्रेडिक्शन लीग. एफपीएल तो सबके लिए है. मेंबर्स ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी का ऐसा है ना, हम एवरेज रैंक पर वीक का रैंक देंगे, एवरेज पॉइंट्स. तो अभी तक एवरेज बेसिकली मेसी का सबसे ज्यादा है, लेकिन मानव सेकंड, आई थिंक श्रेय पाटिल आप थर्ड हो.
I fail to understand why didn't Chelsea go for Jesus. They went for Sterling, who's not at all good at scoring goals. वेल दिव्यांशु यहाँ पर मैं डिसएग्री करूंगा थोड़ा सा. स्टर्लिंग के रिकॉर्ड, यस ही इज नॉट योर मतलब रिलायबल फिनिशर नहीं है. आई कैन गेट दैट वे इफ यू सेइंग, बट ही इज नॉट एट ऑल गुड एट स्कोरिंग गोल्स. आई डोंट गेट इट बिकॉज आई थिंक जो एक ऑफसाइड गोल था, यस ऑफसाइड था लेकिन बहुत स्लाइट ऑफसाइड था. बहुत ही बढ़िया फिनिश किया था यार. स्टर्लिंग हैज इट, हाँ, लेकिन काफी मिस भी करते. गैब्रियल जेसस आल्सो मिसेस. आप देखना गैब्रियल जेसस विल आल्सो मिस. ही इट इज अ रन ऑफ फॉर्म दैट इज हैविंग, बट उसका हायर सीलिंग है. ही इज यंगर, सो आई कैन गेट दैट. आप क्यों बोल रहे हो? मे बी वी वेंट फॉर हिम और गैब्रियल जेसस खुद चाह रहे थे आर्सेनल जाना, वो भी हो सकता है. वी डोंट नो लॉट ऑफ स्टोरीज जो आते नहीं है ना, बिट्स एंड पीसेस. Okay, maximum took the game to Man City. Yeah, he was amazing. Yeah, again, who was the man of the match? यार दोनों गेम्स में. चेल्सी वाले गेम में भी बता दीजिए. यस, डेफिनेटली नॉट एडवर्ड मेंडी. मेंडी वाजंट द मैन ऑफ द मैच. डेफिनेटली नॉट कूलीबाली. और यस, नेक्स्ट वीक भाई लेस्टर. ओ माय गॉड, आई होप वी गेट फोफाना बिफोर लेस्टर यार. मतलब who's going to play center back? Who is? वी आर लाइक चालोबा को खिलाना पड़ेगा. चालोबा कैन नॉट गो आउट ऑन लोन. और वहां पर इमेजिन भाई, चालोबा अगेंस्ट मैडिसन एंड ओवाडी. आई डोंट नो मैन, क्या बोलता हूं. मच एज आई लाइक द गाय, मुझे नहीं लगता इज अ स्टार्टर इन चेल्सी वीक इन वीक आउट. और इन गेम जहां पर यू कैन फेस अ डिफीट लाइक लेस्टर, जो ऑन दैट डे कैन बी गुड, नॉट ग्रेट. बट हु वाज द मैन ऑफ द मैच चेल्सीज गेम ओवरऑल? वुड यू से इट इज एरनसन? मेरे लिए एरनसन थे. एरनसन हैड अ फैंटास्टिक गेम. कूलीबाली गॉट अ रेड कार्ड बिकॉज ऑफ एरनसन. एरनसन चढ़ गए थे भाई कुलीबाली के ऊपर, टोटली चढ़ गए थे. तो एरनसन 100% मेरे लिए लीड्स के वी हैव टू गिव हिम ऑल द क्रेडिट. और यस, एफपीएल में मैंने शाउट आउट दिया था एरनसन को, लीजिए. उन्होंने 2 वीक पहले बोला था मैंने, फॉर अ रीजन. द गाय इज एक्चुअली गुड. व्हाट अबाउट न्यूकासल मैन सिटी? न्यूकासल मैन सिटी, वुड यू से द कमबैक जो किया मैन सिटी एंड हालैंड प्लेड अ बिग रोल उसमें. मे बी हालैंड बिकॉज ब्रिलियंट, लेकिन बर्नार्डो सिल्वा आज स्टार्ट किए, काफी अच्छा किए. बट सेंट मैक्सिमन नहीं, probably Saint Maximin, right? I'll go for Saint Maximin यहाँ पे. Newcastle end on front page. Thanks to Newcastle भाई, at least Chelsea front page नहीं आएगी for bad reasons. Kunal बोल रहे they will definitely be in the top of the table. Newcastle, that is okay. Chelsea needs to go for Anthony. आई डोंट थिंक सो. भाई मतलब हाँ, आई डिड से दैट आई नीड अ प्रॉपर विंगर, लेकिन थोड़ा स्ट्रेंथ एलिमेंट भी चाहिए. तो आई वुड रादर गो फॉर बेसिकली, हाँ, राइट साइड विंगर नहीं है बट स्टर्लिंग वहां खेल सकते हैं. आई वुड रादर हैव लेफ्ट साइड विंगर लाइक अ जाहा, हु कैन बेसिकली प्ले द फॉरवर्ड भी, और प्रीमियर लीग प्रूवन है. दैट्स व्हाट मैं जाना चाहूंगा अभी के लिए, अगर आप पूछो तो मुझसे. या बिल्कुल यार दिव्यांशु, बिल्कुल यार. मेसी यार, थैंक्स फॉर दैट मेसी. बिग अप टू ऑल द मेंबर्स एंड मॉड्स स्पेशली, बट एवरीवन वाचिंग एज वेल. यस, वी आर क्लोज टू 5K, बट दैट जस्ट एक पहला सीडी यार. वी हैव टू गेट टू 10K by the end of the year. That's the challenge absolutely on both the channels. That is Almighty Sports Plus भी check करिए. Everyone who's not checked till now, please, means a lot. It's always tagged in the description, first 3 lines. It just takes a second. और like भी ठोक दीजिए सब लोग. Chelsea needs a goal scorer who can score every game. Well, who's that guy? Let me know. आज कुलीबाली नर्वस क्यों लग रहा था भाई? इट वाज बिकॉज ऑफ द पहला फर्स्ट 6-7 मिनट्स ईगो वेंट इनटू हिज हेड. वो येलो कार्ड पे था, इसीलिए वो नर्वस लग रहा था मुझे. मैन ऑफ द मेंडी, अंशुल, कम ऑन. मेंडी इंस्टावार्ड अवार्ड फॉर इंस्टेंटली लूजिंग द फिक्सचर. डी डे टुमारो, नॉट रिलेटेड टू गेम बट प्रोटेस्ट. या दानिश, देखते हैं मैच, होपफुली हो यार. रॉड्री, ओके, रोड्रिगो बोल रहे हैं मेसी. कैन चेल्सी पुल ऑफ 3 ट्रांसफर्स, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर बैक, मिडफील्ड? हमें चाहिए दिव्यांशु ये, लेकिन कैन वी? हमें तो मैं तो बोलता हूँ भाई, वी नीड अ विंगर एज वेल बिफोर द डेडलाइन डे. एंड इफ अंकित भाई, यू हैव टू प्रायोरिटाइज फ्रॉम दिस पोजीशंस, व्हाट वुड यू चूज? ओके, आई वुड स्टिल गो फॉर अ सेंटर बैक. डेफिनेटली सेंटर बैक और सेंटर फॉरवर्ड दोनों जा सकते हैं. कम ऑन, टाई है यार. सेंटर बैक और सेंटर फॉरवर्ड मत ज्यादा चाहिए. मिडफील्ड डेफिनेटली आज मिसिंग थी, लेकिन स्टिल वी हैव इनफ प्लेयर्स टू प्ले 3 इन मिडफील्ड और क्राउड ऑफ द मिडफील्ड. जब कांटे कोविचिच नहीं है, वी स्टिल हैव दैट. नंबर 8 से तो प्ले 4-3-3. हमें एक नंबर 9 प्रॉपर चाहिए, और हमें चाहिए एक सेंटर बैक भी, क्योंकि थियागो सिल्वा आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू प्ले वीक इन वीक आउट. वही प्रॉब्लम है हमारी. एंड बैक फोर में एसपी, जेम्स और कुकरिया को मैं सेंटर बैक कंसिडर ही नहीं करता. तो आई डोंट थिंक आमपडू जो बेंच में थे खेलने वाले. कम ऑन, लेट्स गेट रियल एज वेल एज चालोबा एवरी गेम. Okay, Rodri and Rodrigo were the man of the matches. Okay, for the third goal, De Bruyne assist. Oh, brilliant! What a assist here, De Bruyne. Okay, Chelsea were playing on Leeds tempo and getting carried. हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है हेया का, बहुत ही अच्छा पॉइंट है. आई नो यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, लेकिन बिग अप आपको, मच रेस्पेक्ट.
तो क्या है ना, उसी पॉइंट पर हमें चाहिए था एक बॉल विनर, हमें चाहिए था एक फ्री किक विनर, हमें चाहिए था एक फाउल विनर, वो नहीं था. A player like a Pulisic, a player like a Grealish, a player like a Hazard, did we have that on the pitch for the first 55 minutes? नहीं, क्योंकि वहां पर गेम रुक जाता. हमें चाहिए था कुछ गेम्समैनशिप, और वही मैं बोल रहा हूँ, वी नीड एक प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड हु आल्सो हेल्प्स इन डिफेंस और हु ब्रिंग्स एक्सपीरियंस. That Trippier free kick, yeah, that was also a moment, absolutely. अरे, thanks for joining, bro. कभी फैंस के साथ वॉच अलॉन्ग क्यों ड्रॉ निकालो. हाँ, करते हैं भाई, करते हैं. मतलब वी विल डेफिनेटली डू. मतलब हम डिस्कॉर्ड पे करेंगे. यस पीपल, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लीज ज्वाइन करिए. वी आर प्लानिंग समथिंग ऑन डिस्कॉर्ड एज वेल वेरी सून. इट इज ऑलरेडी प्लान्ड ऑलमोस्ट. हमें इंप्लीमेंट करना है. सो आई जस्ट वांट मोर पीपल टू जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर. एंड इस हफ्ते में हम OMI भी करेंगे ऑन ऑलमाइटी ब्लूज FC, और डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी कुछ करेंगे. We'll play something. So that is especially for members, but even Discord members, जो भी ज्वाइन कर सकते, तो वहां पर करेंगे. डिवाइन म्यूजिक स्कूल, बिग अप आपको. Yeah, exactly. We were going for Adama. Problem is that Tuchel खेलना चाहते थे wing back system with him being a wing back. और वो चाहते नहीं थे कि wing back हो. Plus he is not your finisher. हमें चाहिए एक wing back. हमारे wing backs, we depend a lot on them scoring goals. Adama is not your goal scorer. City is a champion side, but Newcastle made City to hurry into. Yeah, bilkul. Big up to Aditya as well. As a City fan, all I can say that we haven't reached anywhere near the potential of the squad. Walker did better in the second half. What on earth Foden thinks he is? No cohesion. No, he needs to adjust. मतलब problem is that देखिए, Bernardo Silva has not started अभी तक. वो आए, he did very well, but what was other players around him? That's the biggest question for me. Plus the fact that were Newcastle in a out to make a point, जो Leeds भी थे against Chelsea. We showed character today, but just not good enough. We need to hit top gear soon. But I still feel that you will win the league. Let's be real यहाँ पर. Man United fans are backing and wanting Maguire to Chelsea, but I don't want a Chelsea play back three. Oh my god, I don't think so. He'll fit in my opinion. And yes, let's get to the likes, people. Come on, भाई, 100 likes तो हो जाने चाहिए कम से कम. Let's get to 100 likes minimum यार. उतना तो कम से कम होना ही चाहिए, नहीं? क्या बोलते हो? यार, again, I would not blame a single person here. I would blame the entire formation, एक pressure creation, एक negativity, plus the fact that हमारे पास players mentality के नहीं है. Scouting, it's an entire totality, मैं बोलता हूँ, everything. Tuchel, very bad choice. And again, Julian, Shashwat, भाई आप लोग सब hopefully आप subscribed हो to Almighty Blues FC, and also do consider subscribing to Almighty Sports Plus, which is a second channel. But I have to say, this was basically a performance जहाँ पर the reality check हमें चाहिए था before maybe the transfer window. Yes, transfer window में things cannot change in 10 days. लेकिन at least we will go that extra 5 million. We will at least, try harder to keep people जो हमारे fringe players है, because अभी हो सकता है fringe players might just get a chance. Like to RLC आया था last match में, maybe we'll get more players coming and playing. Maybe an Ampadu plays. I'm not saying वो खेलना चाहिए, but एक competition बढ़ेगा because people know that team हक भी सकती है ऐसे, और there is an opportunity in the starting 11, और वो create करना है टूकल को. We cannot be in a comfort zone. और Man City on the other hand, I don't think आपको panic करना चाहिए. Yes, definitely you should have done better defensively, but you have to give to the world class Kylian Trippier goal. बहुत ही important moment. प्लस आप बोलिए, क्या वो ट्रिपियर वाला रेड कार्ड होना चाहिए था? इन माय ओपिनियन मैंने होते ही बोल दिया था भाई, रेड कार्ड नहीं होना चाहिए, इट्स अ डाउटफुल वन. लेकिन द फैक्ट दैट द रेफरी गेव अ रेड कार्ड एंड देन चेंज इट, वाज इट क्लियर एंड ऑब्वियस फॉर दैट? बिकॉज नी को तो टच हुआ था. तो आप वहां पर बोलिए, आई स्टिल फील इट्स नॉट अ रेड कार्ड, इट्स अ राइट डिसीजन. Frankie wants to stay at Barca, but maybe convinced if Chelsea make a good offer. I doubt it. Frankie तो शायद नहीं आने वाला. I really doubt it. Again, I hope I'm wrong. लेकिन मुझे लगता है ओबामेयांग के लिए हम ज्यादा पैनिक कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अगेन है मिडफील्डर्स काफी who can play in a 4-3-3. Problem is we don't play that formation. और क्यों नहीं खेलते हैं? बिकॉज हमारे पास नंबर 9 नहीं है. मे बी तो नंबर 9 अगर आ जाए तो हो सकता है we might change. Only with a DM and और प्लस याद रखिए, Aubameyang has played under Tuchel a lot and successfully in a 4-3-3 system. वो भी एक है. वहां पर Pulisic भी थे, if I'm not wrong, right? तो वहां पर there is a point. Okay, DM and Fofana, we can change formation. Fofana has recovery pace. Fofana also has mistakes. I would not call Fofana like a week in, week out, a top two player. Arey Shashwat Banerjee, bhai, big up. My people, we have a new member in the house. Shashwat Banerjee, bhai, shout out hai. Shashwat OP ho jaye. Everyone, and of course, Manav bhi, हमारे fellow member है भाई, big up आपको भी.
भाई शाश्वत, वेलकम टू द ऑलमाइटी फैमिली. यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भाई, देर आर डिफरेंट लेवल्स. आई चेक विच लेवल यू आर, बट अगेन भाई यू कैन डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ पर्क्स, तो टेक अ लुक. डेफिनेटली यार, आपने जब मेंबर बना आपने देखा है. अगेन, फॉर ऑल मेंबर्स आउट देयर, हम एक्चुअली क्रिएट करें एक प्रेडिक्शन लीग. तो सबसे पहले शाश्वत, हो सके तो आप मुझे डीएम करिए ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी ऑन ट्विटर या इंस्टाग्राम, एंड दैट गोज फॉर ऑल द मेंबर्स एज वेल. डू ट्राई एंड शेयर और ईमेल आईडीज, बिकॉज मैं मेंटेन कर रहा हूँ एक शीट वेयर आई एम बेसिकली मेकिंग अ प्रेडिक्शन लीग. वो एवरेज स्कोर पर वीक के हिसाब से विनर होगा, तो यू कैन स्टिल पार्टिसिपेट आफ्टर बिकमिंग अ मेंबर. एंड यस, let's get to 10K subscribers quickly, hopefully everyone, and 50 members as soon as possible. बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स यार मानव, आपको भी. एंड ऑफ कोर्स, टॉकिंग अबाउट मेंबर्स, वी हैव फुटबॉल विद कॉमेट इन द हाउस. अरे यार मैं आप देखिए भाई, 1 घंटा में मैं भड़ास निकालने की कोशिश किया हूँ अपना दी बेस्ट. आई हैव स्पोकन अ लॉट ऑफ थिंग्स, डू चेक इट आउट when you get the time भाई. लेकिन मैं इतना ही बोलता हूँ, इन शॉर्ट ना, इट्स अ टोटलिटी. यार प्रॉब्लम इज अ लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर विद द क्लब, और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. वी कैन नॉट, मतलब हम हाइड नहीं कर सकते आड़ में कि भाई रेफरी ने गलत किया है, प्लेयर इंजर्ड थे, वो सब भाई. मेंटालिटी इज एन इशू, वो है बॉटम लाइन. नो प्रॉब्लम विप्रा, मच लव. आर्सेनल फैन भाई, टॉप ऑफ द टेबल. मैंने विप्रा, यू मिस द पॉइंट, और मैं वापस नहीं दिखाऊंगा. विप्रा, यू मिस दैट. ये मोमेंट वापस से कब आने वाला है भाई? ऑन ऑलमाइटी ब्लूज एफसी आई फ्लैश द टेबल जहां पर आर्सेनल, यस विप्रा इज आर्सेनल फैन से बोल रहे, टॉप ऑफ द लीग मैंने फ्लैश किया और कंग्रेचुलेशन बोला है भाई. विप्रा आप देख लीजिए, डू क्लिप दैट. माउंट एंड हैवर्ट्स वर नॉट अप टू द मार्क. या यार, मतलब माउंट को मैं, कम ऑन, थोड़ा बेनिफिट डाउट दूंगा. हैवर्ट्स, I think it's time that he's been dropped. As soon as Broha hote 100% fit or we sign a striker, he's dropped. Let's be honest, he cannot be relied upon. Cup games may okay, not in league games. Become a member from a country, Tanzania. No problem, Lomanu. Your support means a lot. Again, like, share, subscribe. आप हमेशा you help करते हो on both our channels. That is, मैं चेल्सी वर्सेस लीड्स का स्कोर लाइन देख के हिल गया. मैच देखिए यार, और भी हिल जाएंगे. मैच देखिए आप. डू चेक इट आउट एब्सोल्युटली. ओके, पॉइंट फ्रॉम टुडेज सिटी गेम. चलो नाइस, मानव मानव का एक रिव्यू कर देते भाई जल्दी से. एडिसन बेटर एट शॉर्ट स्टॉपिंग, but still improvement needed. Okay, Foden needs to adjust with Haaland. Silva can play right wing. Rodri needs to fall back to help Walker. बिल्कुल भाई, बहुत ही बढ़िया कमेंट्स है यहाँ पर. And I 100% agree. The fact that Bernardo Silva is playing, elevates your attack. लेकिन उससे क्या होता है भाई, आपका जो midfield है, they need to kind of work better with Haaland. लेकिन भाई, what do you think, Manav? Have you seen in recent weeks? Have you seen a better pass than De Bruyne assist? Please let me know. Everyone in the house. Angit, Havertz should challenge Mount. हाँ, by the way, आप बोलोगे मॉडरिच का जो असिस्ट था इन द चैंपियंस लीग, मैन, दैट वाज ऑसम. लेकिन आई थिंक दिस वाज आल्सो ऑसम. नॉट टोनी और ओबा. दैट्स अ पॉइंट. देरेन वही बोल रहे. तो यहाँ पे स्काउटिंग, टूकल मैनेजमेंट थोड़ा सा इश्यू है. व्हाई डू वी वांट ओनली दोज निम्बल फॉरवर्ड्स? हमें एक चाहिए प्लान बी, और हम हमारे प्लान बी हैवर्ट्स नहीं हो सकते. वही प्रॉब्लम है. ड्रॉप करा तो स्वैप करते Hazard, Havertz. अरे भाई, you think Chelsea should have sold Havertz instead of Werner? No. I don't agree. यार कमेंट, जयेश भाई, आपने तो काफी देखा है मुझे यार. देखिए यार, वर्नर सर्टेनली वर्क्स वेल इन सर्टेन मैचेस, लेकिन वो सर्टेन मैचेस बहुत ही कम है. हैवर्ट्स फिर भी यार, इन अ 38 गेम सीजन वो ही विल टर्न अप फॉर एटलीस्ट 15 गेम्स. यस, ही स्कोर्स यू लेसर गोल्स देन वर्नर, बट ही इज नॉट अ स्ट्राइकर. वर्नर इज अ स्ट्राइकर, तो उसको मैं वैसे जज करूंगा. ही इज अ इनसाइड फॉरवर्ड. यस, ही इज नॉट अ कोर स्ट्राइकर भी वर्नर, लेकिन ही इज अ वाइड फॉरवर्ड, इनसाइड वाइड और इनसाइड फॉरवर्ड. तो मेरे ख्याल से वहां पर यू रादर judge him on the goals, and not just that, a gameplay be Havertz far more skillful है. To create chances, he can be helpful in the future. Or remember, Havertz is much younger, higher ceiling हो सकता है. तो very different players, but I would definitely have sold Werner itself. Okay, सिटी के टैक्टिशियंस. अरे क्यों भाई? कोई नहीं. इट्स टू अर्ली, नीड टू बी काम एंड नॉट कॉक. भाई लेकिन वही है ना, आई एग्री, एंड दैट इज व्हाई आई रेस्पेक्ट बिप्रा एंड सम आर्सेनल फैन डेफिनेटली यार. देखिए, you know your stuff, लेकिन the fact that you are at top of the table of 3 games is something of एक progression हुआ है. और I would love to say that Arsenal be Arsenal, Spurs be Spurs, लेकिन भाई दोनों ही teams top 3 में हैं. You cannot go against that, can you? Leeds second, यार, what a day to be a Chelsea fan. Arsenal first, Leeds second, third Tottenham. Is it for real? I don't know what to say.
बट कोई नहीं, इट्स जस्ट वन डे, विल कम बैक, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन कंसिस्टेंट रहेंगे, आई स्टिल डाउट इट. न्यूकासल विन डिजर्व करती थी भाई, बट ड्रॉ अगेंस्ट सिटी, डिजर्व आई डोंट नो मैन. सिटी को देना पड़ेगा यार वो मेंटालिटी, और बाद में काफी सारे चांसेस बनाए थे. That Mount pass to Kukurea should have been passed to Sterling. He was right there in better position, but anyways. और Aditya, why not? Even Kukurea should have taken a shot. जो एक सेकंड लेट लिया. RLC, नहीं, दोनों ही यार विंग बैक्स आज बेसिकली फिनिशिंग में इश्यूज थे. बट वुड यू ब्लेम देम? नो, because they are not meant to be scoring goals. You are supposed to have your attacking mids and your forwards do that. They are not that in this system. तो यहाँ पर या यू कैन से दैट दे बिकम योर अटैकिंग मिड्स, बट अगेन ओके. गुंडोगन गोल भी अच्छा था बाय द वे. कल रूडिगर यार बिल्कुल मैंने देखा था यार. व्हाट अ मोमेंट यार, व्हाट अ मोमेंट यार. स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर बैक टू राइट बैक, देन राइट विंग, देन सेंटर फॉरवर्ड. भाई क्या था वो. Manav, Baga, are you planning to replace Pepe's Ankit surely? Arey, Manav is my. I know he's not an almighty coach technically, but he's my coach in FIFA. You know, he knows it definitely. By check out my FIFA streams on Almighty Sports Plus. Definitely, it helps. KDB's business as usual. So it's Gundo, Bernardo, Cancelo, Aki, or by the way, Nathan Aki injured. Manav, if I'm not wrong, bad. He was in a terrific run of form. हाँ बोल सकते हो, come on. You have a Ruben Diaz who was benched. You have basically Laporte coming back, will be fine. But Nathan Aki, by that form, you have to give it to him. Bad luck, here, simply put. Today is the match of blip or much deeper problems. I feel there are much deeper problems. I genuinely believe there's much deeper problems. We cannot just turn up, against maybe all of a sudden, say against Spurs or Real Madrid or knockout matches. Generally, we have to be having that mentality or come back. Spirit should be there. That spirit, that captaincy material is needed. We need a captain. We need Thiago Silva, in my opinion, to be the captain. Gonna be a big thing for upcoming years. Okay, let's see. But it's too early to call Bipra for Newcastle. I still believe. Let's see how it is. And yes, people, come on. Likes nahi hua yaar. Sab log like kar dijiye, please. It certainly helps. And I know a lot of people are watching without subscribing. It doesn't take a buck. Please subscribe to the channel. It means a lot. Or agar subscribe kar rahe ho, please hit that bell notification icon. And that goes for both our channels. This is Almighty Blues FC that you're watching. It's a fan channel for all to see. But we also cover a lot of the content on football, and not just that, much more than that on Almighty Sports Plus, which is also linked in the description below, always in the first three lines, and also join our Discord server. Yes, membership is on for people who are seeing, we are having a prediction league going on. Okay. We are playing Champions League football. I don't think Manchester are playing Champions League football. Banter, oh my God. ये क्या चल रहा है भाई, पता नहीं. लेकिन मेरे ख्याल से आएंगे यार, एंटनी जाने वाले, as much as he would like. लुकिंग या बिल्कुल जस्ट या रियली सैड यार. नेथन आके के लिए मैं बहुत सैड हूँ. एब्सोल्युटली. एंड यस, एब्सोल्युटली, वी नीड मोर पीपल. वी कैन ऑलवेज हैव मोर पीपल. कम ऑन, क्लोज टू 5000 पीपल. होपफुली विल गेट मोर पीपल इन फर्दर स्ट्रीम्स एज वेल. जैसे व्हाट, मैंने एक लाइन, आप डिस्क्रिप्शन देखिए, मैंने लास्ट लाइन क्या लिखा है. यस, एज मच एज आई एम नॉट लाइकिंग जैसे मार्शेस कमेंट्स बिफोर द मैच और ड्यूरिंग द मैच जो चल रहे थे, लेकिन आई हैव टू से बेसिकली क्या है ना, Leeds have marched over Chelsea. That's what happened. Tactically, be it by spirit, be it anyhow, be it player quality. आज सब चीज Leeds की बेटर. They have marched over Chelsea. Simply put. Again, what's happening with West Ham? They have Skamasa, yet they start Antonio. They will change. I think probably they didn't want to hit the panic button. लेकिन अभी चेंज करना ही पड़ेगा भाई. तीसरा गेम लगातार हग रहे भाई. They have to. Not as bad as obviously a certain team. लेकिन I think they're pretty bad. Let's be honest on that. Match happening tomorrow. Heard from you. Yes. So there are reports, Lumanu, that if there is a protest at Old Trafford, and it has happened in the past. Remember, people, I think during lockdown, जब just खुला था, जब एक protest हुआ था, I think it was last year or last season, last year to year, मतलब एक बार हुआ था, where the game was called off because of a protest. If it goes more than that, then that is what it is. And yes, people, this is just a reminder for you all. Lekin again, low Manu, I think it's going to happen. I know certain set of Manchester United fans in the UK. I believe it's not as bad as what it could have been. But I think probably match will happen. Let's see. We'll again try and do a pre-match and a watch along, or either one tomorrow live to Rehna definitely. Or yes,
football is coming left, right, center. आज रात को भी matches है. Yes, I know my team, second team, Milan is going to play in some time. But again, with Chelsea, I've been so down. But yeah, this is a reminder, people. Just look at that. Thanks for this again. And like Manav is also, reminding everyone, let's absolutely do that. But Oba is also not a good finisher. Chelsea should have pounced on Lewandowski. मैं तो बोला ही था भाई, Vlahovic नहीं, Lewandowski, we should have gone all guns blazing. हमने tempt करना था proper यार, proper temptation देना था. Doesn't matter 33-year-old. I think Lewandowski ही होना चाहिए था. I think it's basically very very late now to react. Aubameyang, only reason is Tuchel जानते हो, he knows what to expect. Or the fact that he's played Premier League football and pretty decent apart from Arteta. You want for Chelsea? What is it? Yeah, बिल्कुल बिल्कुल यार. Do you back or support the protest as a non-Man United fan? नहीं यार, मैं क्यों support करूंगा? The fact is, yeah, मतलब you can say as an opposition fan, I am like okay the way Manchester United, but सच में बोलूँ ना, I kind of miss those old top four rivalry days. I have to be very honest. Yeah, I kind of miss that. Having said that, I think the problems are more than the Glazers. Just like Chelsea, bhai, certain problems come as excuses. I think that comes for Manchester United. You have to change the mentality as a club. और वही करनी है चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों को. एंड नहीं तो भाई, clubs like Newcastle, they are waiting in the wings. Trust me, I'm not even joking there. Yes, it's too early. Not going to happen anytime soon. लेकिन भाई eventually it may, right? So we have to be getting that winning mentality. इसलिए हमें चाहिए एक proper leadership group. हमें चाहिए एक leadership group which is a voice on the pitch. We need, again, coming back to the captain for Chelsea, I genuinely believe the club captain right now should be Thiago Silva. As much as I love Aspi, as much as I adore Jorginho, I think that Thiago Silva leads by example. Probably you'll see people doing slightly better, is what my take is. Maybe it may not work, but try karna banta hai. The defenders from blue side of Manchester just showing how the counterparts from the red side defend in the first 50 minutes. Okay, 7-0. Yeah, मुझे मैंने देखा था और मैंने congratulations आपको भी shout out दिया था यार. Bayern fan in the house. You know what? Tony is probably a safer option. एक है, first of all, he's young. Secondly, he is more recently proven the Premiership. Thirdly, he is, yes, Aubameyang भी काफी mobile है, but I think he's a little bit someone जो आप mold कर सकते हो a little bit more compared to Aubameyang at this age. So that's what मैं जाऊंगा for Tony. And of course, remember the header. The heading ability, I think वहां पर not only attacking headers but defensive headers में Tony can help you more. That's what I would say. Absolutely. Then match will take place because चलो देखते. Oh, ये official नहीं है ना, FA to give 3 points. I don't think so. Is it official? I don't think so. I'm fuming. Yeah, just while I just finished fuming, but again, maybe it's going to come back tonight. Let's see. I just not. I don't like the inconsistency. I don't like the fact that we give up so easily. I don't like the lack of fighting for the second ball. Those are things that are questionable. I don't like the lack of flexibility. I don't like the and suddenly over experimentation. These are things that we have to 5-6 points है. I know मैंने 3 points में thumbnail में डाला है already. क्या है मेरे 3 points review का आज वही हुआ. पहले pain मिला for everyone out there. We got first pain, and how was that? Obviously we are Mendy. Then obviously panic. We panicked. Obviously we Sterling panicked and gave away the free kick. और हम free kicks defending में अच्छे नहीं है. And then भाई पॉटी कर दिए. That is why what Mr. Koulibaly did. Unnecessary, totally unnecessary. Especially जब हमारे पास इतने डिफेंडर्स नहीं है, especially जब हमारे पास इतने लीडर्स नहीं है, and the fact that he is still youngish in the league, तो उन्हें ज़्यादा गेम्स चाहिए. Leicester game would have been ideal for him again to come back to form. Anyway, when Dalo was in Milan, was he that bad? Diogo Dalo, नहीं Diogo Dalo भाई, Dalo was he was actually coming from Portugal, ना? डालो मिलान में थे क्या? एक सेकंड, लोन में गए थे. राइट करेक्ट, मैं भूल रहा हूँ, सॉरी यार. टू बी वेरी ऑनेस्ट, I don't think he was a starter, so I don't think it'll be fair to kind of judge him. But in my opinion, he did pretty well at Porto. Yes, he was in Porto's young as in youth team, from what I remember. But in my opinion, I had seen a lot of clips उस समय आ रहे थे भाई, he's that good. Or again, I know it's clips, it's not week in week out football, but I think he was pretty promising. और वही हम देख रहे हैं भाई, clubs went for him, etc. There was a bid, etc. And then finally it's happened, right? Again, I have noticed it since the Bernabeu leg semi-final. Okay,
City have made two incredible comebacks, 3 to Villa and 3-3 Newcastle. Maybe this can be the final piece of the puzzle for us in UCL. मानव, अगर आपने सुना है और जो आप सुनते हो, मुझे काफी और काफी सिटी फैंस भी है, आई नो, इन द हाउस. You know what I can clearly say? I have said it already in many streams on many channels as well. You know, as much as opposition fans like to say City bottlers, PSG bottlers, hear it right now again. What City and PSG fans are going through right now, I have exactly gone through in mid 2000s. आप मैं बोल रहा हूँ, every year you kind of got closer to that winning mentality. वो basically एक character और वही कर रहे सिटी. तो I think you have to give them absolutely. Uh, देखते हैं inconsistency. We need one signing each in defense, midfield, and attack. Absolutely, and let's see. मतलब again, I don't think just the transfers will do. It's more about the mentality, really. Just while I would say, और वहाँ पर शुरुआत होती है टूकल से. We cannot really, you know, bring any excuses. We need to basically be more risk taking. थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए हमें. We would batter by championship clubs. You know what? Mentality is the key. वहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना. Carpet football in Chelsea's DNA. Well, Roman Abramovich always wanted that, but you know, एक थोड़ा सा समय के लिए आया था in between. Yes, Ancelotti kind of did that. Then we had basically the three amigos. जब Hazard, Oscar and Mata खेलते थे, थोड़ा सा, you know, एक डेढ़ सीजन के लिए आया था. But then again, you know, Mata was moved on after Mourinho came and things changed. So I think वही है, हमें consistency मिली नहीं in a certain way of playing. Tuchel, we have been sussed out. We need to change that, and it's अच्छा excuse for us to go for the back. Simple as that. Oh my god, don't tell me there are 20 more required for 100 likes. I'm like shocked भाई. मैं पौने 2 घंटे से बोल रहा हूँ भाई, लाइक कर दीजिए सब लोग. It doesn't take a buck यार, and that's just for me, just not for me. It's for every streamer out there, every content creator भाई. It means a lot. मुझे मालूम है भाई कितनी मेहनत लगती है. Please hit that like button. Yes, if you're a Chelsea fan, if you're a Man City fan, if you're a Newcastle fan, you might be happy. But again, if you're a Chelsea or a Man City fan, you might not be happy. I understand that you don't want to like, or you're just here to kind of listen to the rant, or listen to basically, you know, just share your experience about, you know, being that fan today. Lekin, let's get that likes up, please. It'll mean a lot agar aap kar do bhai. I think I have a target on the screen for a reason. So let's get to the target, and I'm pretty sure at least triple the number of these likes have actually, you know, watched the stream. So let's actually, you know, like the stream. It'll mean a lot to me. Nick Pope, एक वन ऑन वन था, बहुत ही अच्छा सेव किया था. एब्सोल्युटली, if he isn't wasn't for him, City might have 5 or 6 goals. निक पोप का बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल. जिरू नॉट प्लेइंग दिस गेम भाई, मैं चेक कर रहा हूँ अभी क्विकली. लेट मी जस्ट चेक भाई. आई नो दैट by the way, Rebic started well. I must say, Rebic, I did not expect भाई Rebic अच्छा शुरू करेंगे, लेकिन Rebic started the season well. So I think maybe they are going with Rebic. Let me actually, it's good that आप share करो भाई. Yes, Rebic. तो वही है, they are continuing with the same thing. I think Pioli is very much Ancelotti kind of school of football, लाते Italian school of football, जहाँ पर इतना changes नहीं अच्छा लगता उन्हें. You know, so that's what as a starter. तो आप देखिए यहाँ पर Diaz, Rebic, Leao. Let me just remove this banner for the timing. This is what is happening. By the way, Atlanta, AC Milan, bhai, sab log dekhna. Yeah, it's starting at 12:15 a.m. Indian Standard Time. It's going to be a good match in my opinion. Or do get in your predictions as well. क्या होने वाला है इस गेम में? I genuinely feel that Atlanta एक ऐसा टीम होगी जहां से Malinowski etc. they might lose in the next few days of the transfer window. Yes, वो काफी linked है. Players out. Maile के साथ हम भी linked थे. अब देखते हैं whether we'll get a wing back. I doubt it. लेकिन let's see. I still feel that Atlanta not in basically that kind of form versus AC Milan. तो मैं तो भाई थोड़ा सा bias बोलो, wearing the AC Milan you know specs, और मैं बोल रहा हूँ AC Milan जीत जाएगी ये मैच, बट लेकिन डिफिकल्ट होगा, हाई स्कोरिंग रहेगा. आई एम कॉलिंग इट 3-1 to AC Milan अवे. आप लोग बोलिए क्या लगता है इसमें, एंड who will be the goal scorers as well. By the way, I do see बेंच में जिरू है, तो जिरू है, ओरिगी है, चार्ल्स दी कैटलियर है, और सैलेमाकेर्स है, एज वेल एज बेसिकली बाकायोको भी है. तो आप देखिए मतलब काफी लोग मिडफील्ड और फॉरवर्ड लाइन में है. इसी मिलान की अच्छी बेंच है काफी. तो बिल्कुल दिरेन, आई होप दैट्स सॉल्व नाउ. 2 to 3 साइनिंग्स दिस वीक. मैन, टूकल इज हिमसेल्फ एक्सपेक्टिंग मिनिमम 2. मैं तो बोलता हूँ एक स्ट्राइकर और एक सेंटर बैक. अब ये मिडफील्डर का थोड़ा बिग क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए. लेट्स सी. भाई चुकुमेका आज बेंच पर थे, तो आई डोंट नो. अरे थैंक्स यार, थैंक्स. Again, I am not sure about that, whether I agree, whether I deserve the highest number of subscribers. I myself am a fan of lot of channels, इसलिए we ourselves
promote them. We kind of feature them. I'm not sure if they promote me as much. I know that they have loved me as well, but again, this is for a shout out to all the content creators, not just in India, but generally content creators for football and for sport in general. Because I know it takes a lot, but again, these channels will not run if not for you guys. So you guys are the real heroes. It's just a start. Abhi yaar, we have to get to 5K, then we have to go to get 10K. But hopefully you get us to 5K this week, and of course get the likes to 150 at least right away. Let's do that firstly. 3-2 तो मिलान, चलो अच्छा गेम होगा मतलब. नाइस वन. मेंडी को व्हाइट जर्सी देख के ओ मैन, ऋषिकेश क्या ही बोलूं भाई, मतलब अभी हंस रहा हूं आई नो, बट या बिल्कुल 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 भाई. वॉटफोर्ड वाला गेम आई थिंक वही है. सर्टन मैचेस में यू नो दैट दीज आर लाइक योर प्रॉपर मीम वाले मैचेस ना. बकायोको वर्सेस वॉटफोर्ड वो वाला मैच था. अगेन आई फेल्ट पुअर फॉर द गाय, सैड फॉर द गाय, लेकिन भाई कम ऑन, ही इज नोवेयर नियर व्हाट हमने पे किया था उसके लिए. स्टैग्नेंट या, एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग हियर बिकॉज वो डॉर्टमंड में काफी एक्सपेरिमेंट करते थे. आई डोंट नो व्हाट, मे बी यार प्रेशर है चेल्सी में ज्यादा. आई डोंट नो व्हाट टू से. और द फैक्ट दैट हमने चैंपियंस लीग जीत लिया, सुपर कप जीत लिया, क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया, सो मे बी उसके, और हम वी वर इन 2 फाइनल्स, सो इट्स मे बी just tapering over the cracks, you can say that. Maybe that's why Tuchel doesn't want to change too much in terms of the tactics. लेकिन I genuinely feel that आज के बाद अगर चेंज नहीं करें तो क्या, कब तो चेंज करेंगे भाई. आई थिंक देयर आर अबाउट 35 लेफ्ट, 30 ऑड लेफ्ट, 32 लेफ्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर 5K. भाई सब लोग डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. इट्स नॉट जस्ट अबाउट 5K but generally also definitely we have to get to 5K. But more importantly I would say, जो भी content creator आप सब्सक्राइब करते हो ना, try and watch and back them as much as possible, or hit that bell notification icon. Means a lot, because for example on Almighty Sports Plus, yes, we are having a lot of support from you all in terms of subscribers, but I'm pretty sure we can get a lot more views. और वो आएगा आप लोग के वजह से. और वैसे कैसे आएगा भाई, फीडबैक भी शेयर करिए, because we are planning a lot of content on both the channels. We have been doing and we will be doing as always. Didn't deserve the win. We were really bad. Yeah, we didn't deserve to win, लेकिन I think we deserve to basically. हाँ, इतना मैं जरूर बोलूंगा गौरव, फर्स्ट हाफ में ना आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू बी 2-0 डाउन, इतना मैं बोलूंगा. लेकिन ओवरऑल आई थिंक वी डिजर्व टू बी 3-0 लूजर्स, प्रीटी श्योर. तो आई वुड टेक दैट. Kepa will be back next game. I know other teams are waiting by licking their lips. बिल्कुल बिल्कुल सर, let's do that. And not just about that, again भाई, people जो सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई, प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना. इट डजंट टेक अ बक, डजंट, पैसे नहीं लगते भाई, हम मोनेटाइज है. दैट इज आपका मन हो एक्स्ट्रा से, आपको मेंबरशिप लेना है, आपको सुपर चैट देना है, आपको सुपर थैंक्स करना है, वो अलग चीज है. Subscription doesn't take a buck. Absolutely, that's what I'm just reminding. That goes for all channels again, including Almighty Sports Plus. Timing of Tuchel again. Timing of substitution of Tuchel is wrong. मैंने काफी बोल दिया. और yes, I have gone for almost 1 hour 50 minutes. ये नेक्स्ट मैच में होगा. हमने अपील किया था, तो आई थिंक अपील हैज बीन टर्न डाउन. उनको फाइन लगा है. आई थिंक कॉन्टे बच गए, लेकिन टूकल बच नहीं रहे फॉर वट एवर रीजन. आई बिलीव इट हम स्क्रीनियर के लिए भी थोड़ा इंटरेस्टेड है, बट देखते हैं. आई डाउट इफ विल कम. नहीं हम करते हैं यार सीएफसी ब्लूज, वी डू अ लॉट. हाँ, ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे कम करते, दैट आई अग्री, बट जनरली आई डू अ लॉट ऑफ कोलैब्स यार. मतलब अगेन द फैक्ट इज आई वुड लव टू डू कोलैब्स ऑल द टाइम, लेकिन वो ये ना, इवन अदर कंटेंट क्रिएटर्स वो भी करते हैं एट द सेम टाइम, सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट देम. इफ यू एक्चुअली फॉलो आवर चैनल क्लोजली, व्हिच यू डू, सीएफसी ब्लूज, इट्स वेरी स्ट्रेंज कमिंग फ्रॉम यू, लेकिन भाई फीडबैक इज फीडबैक, सो आई विल टेक दैट भाई. 2 out of 3 हमारे जो स्ट्रीम्स रहते हैं ऑलमाइटी ब्लूज एफसी स्ट्रीम्स, लाइव स्ट्रीम्स, हम कोलैब्स करते हैं. समवन और द अदर कम्स अलोंग डेफिनेटली. वही मैं बोल रहा हूं, देयर इज अ वेरी लार्ज पूल ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स. गिव एवरीवन अ चांस इज व्हाट आई एम सेइंग. आई लव एवरीवन एब्सोल्युटली. स्टिल नॉट 100 लाइक्स. अरे भाई ये क्या हो रहा है आज. मतलब मैंने तो चेल्सी के लिए परफॉर्म नहीं किया था बैडली, मुझे क्यों सजा दे रहे हो भाई. मैंने तो मैन सिटी के लिए परफॉर्म नहीं किया था बुरा, मुझे क्यों सजा दे रहे हो. मैंने तो अगर शेयर किया आपके अपने बेसिकली थॉट्स, आपके थॉट्स लिए हैं, और just about भड़ास निकाला है, which is something that we all want as sports lovers, and sports sometimes not too good mood, लेकिन we want to do that. और at the end of the day you all are my friends. I genuinely believe that. क्योंकि I probably spend more time with you than even my family, and that's a real thing. तो वहां पर मैं बोलूंगा, that is why I expect थोड़ा सा, तो एक्सपेक्ट करो लाइक्स तो कर दीजिए यार, सब्सक्रिप्शंस कर दीजिए एब्सोल्युटली ऑन बोथ आवर चैनल्स ऑलवेज. या बिल्कुल. अगर मैं काफी नहीं यार, मिलान का वॉच अलोंग के लिए नहीं, मैं खाया नहीं हूँ कुछ शाम से,
तो मैं कुछ खाऊंगा अभी और साथ साथ में मैच देखूंगा. अभी के लिए लेट मी जस्ट काम डाउन अ लिटिल बिट, बट आई विल कम बैक वेरी सून. होपफुली आई विल कम बैक टुमारो मॉर्निंग विद अनदर वीडियो ऑन ईदर ऑफ द चैनल्स. और कल हम करने वाले कंटेंट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल भी. सो प्लीज प्लीज चेक इट आउट. मैं चेक करता हूँ फुटबॉल क्रिक्स. नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम आई ट्राई एंड शेयर इट. बट अगेन काफी देर हो गया है, आई नो. बहुत ही अरे मैं दे आर ऑलवेज वेलकम यार, आई लव दोज गाइस. लेकिन वही है ना, दे देमसेल्व्स आर बिजी. बिग अप टू देम. इतना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं तो दे आर नॉट अवेलेबल लॉट ऑफ टाइम. तो आपको भी समझना पड़ेगा विदाउट रियली अज्यूमिंग. दैट्स व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट. एंड दे आल्सो कॉल मी, जस्ट दैट इनफ मौका नहीं मिलता बस. बट अगेन थैंक्स अ लॉट. हु एम आई इज बैक बाय द वे, टॉकिंग अबाउट कोलैब्स. या हु एम आई इज बैक दिस वीक. तो मिलते हैं. चेल्सी, buck up yaar, buck up, and congrats to Newcastle and Leeds.